on my show name Cricket Fantasy Talk on just and merely solely on cricket. हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिककॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिककॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है यश पाठक। क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? Now on air with the CrickCon commentary team. Okay, welcome. I am debuting today. You know, Karthik, Swapnil Jadhav debuts in the 100. I missed out on a couple of occasions because it was raining, pouring literally on whatever I thought was my debut. But here I am covering this match. Pretty excited. Then the players out there,
because I myself was, I was just praying to the nature that I should be eligible. I am eligible rather for a complete 200 ball game, and it's Today I've got a chance of 400. I've got a chance of 400 literally, and it is my pleasure to join you who has got a chance again to host Jamima Rodriguez again, and we start this. Yes. And sometimes I feel, is this going to be the WPL? Because I can see Harmanpreet Kaur out there in the bowling team, that is the Trent Rockets. And I don't know whether my manager is kind enough on me or my manager picks out certain games, because my third women's 100 game, none of them washed out. But in all three games, I have covered Jemima Rodriguez's game. So, nothing, any favoritism as such. It's great to see women's cricket grow the way it has grown. But let's accept it. The standard of cricket which we see in England and Australia is far different from the standard of cricket. Unfortunately, I have to add India is better than that in Bangladesh, India, and even Pakistan. And definitely infrastructure is more better. Support is more. That's the main thing. There is no discrimination between. Like, of course, there is a favoritism, but there's no discrimination. Women's cricket gets that equal footage as the men's. And this is in the air, and that flies over slip. Catherine Brunt has started this over off, or set off rather, in fine fashion. She got one of Mary Kelly to lift off the surface, and now an outside edge of Jemima Rodriguez flying over first slip. And everyone's smiling. It's the end of the first set, 5 balls done. And the Northern Superchargers are 3 without losing any wicket. And she just pushed it, and the ball flew off the outside edge and even crossed the 30-yard circle. And at least as compared to what happened yesterday in the West Indies-India game, thankfully the 30-yard circle was marked well before the game began. That is something nice to see today as opposed to yesterday. I still can't fathom that such a thing happened in an international cricket match, that a 30-yard circle was not marked. But raat gayi so baat gayi, and Catherine Brunt is, I think she does not want to give the ball. She says, I will bowl the next set of 5 as well. As per the rules, a bowler can bowl a maximum of 10 balls on the trot. So she's continuing from the same end, and it's ball number 6 now. And rightly so, because she has got 2 balls to lift. She could have got both the openers out in the span of 2 balls, but such is the luck. So she does feel that she has some kind of a rhythm going on, and she can tie down the opposition. And it's Northern Superchargers versus the Trent Rockets out here, and it's Northern Superchargers batting first. And it is Harmanpreet Kaur versus Smriti Mandhana. If you want to just build on that a little bit, and the news from out of the centre is that Northern Superchargers have won the toss and elected to field. A look at the scorecard of the Trent. Elected to bat, beg your pardon. I lost my marbles there. So, Mary Kelly and Jemima Rodriguez are the openers for Northern Superchargers. In Phoebe Litchfield, Holly Armitage, the captain. Alice Davidson Richards. Then Bess Heath, the wicketkeeper. Georgia Wareham. Kate Cross. Lucy Higam. She comes in the side today. Lindsay Smith and Grace Bollinger. As far as the Trent Rockets are concerned, their captain is Nat Siva Brunt. And the others are Brian Smith, Lizzle Lee, who is the wicketkeeper, Naomi Dattani, Harmanpreet Kaur, who is standing at mid-off, and she is advising Catherine Brunt what kind of deliveries you can bowl to Jemima Rodriguez and try and get her out. Then Fran Wilson, Joanne Gardner, Catherine Siva Brunt, who's bowling, Alana King, the leg spinner, Alexa Stonehouse, and Kirsty Gordon, an English player. So, we have got 8 balls done now, 5 for no loss are the Northern Superchargers. So far, Jemima Rodriguez has got most of the runs, but they have not been convincing. Another one off the outside edge, and it's you don't see a couple playing in the same team, do you? You never see a husband-wife playing in the same team. But Nat Siva Brunt and Catherine Siva Brunt both are in the same team, the Trent Rockets. Now an appeal for a catch, but neither has been a wide given. Now Lizzle is actually saying if that has not hit the bat, then why hasn't it been given a wide? And now Catherine Siva Brunt is having a chat. There's a partner, Nat Siva Brunt, and Nat Siva is asking, what should I do, folks? Tell me, should I go for the review? And yes, she's gone for the review. And how is she supposed to go for the review? Because it's actually Nat Siva Brunt who's going for the review. Or is this also a hereditary thing that if a partner doesn't say, then the other partner can signal? Because
it's the captain who has to signal for the review. And here, Catherine Brunt actually signaled for the review, and Nat Saver Brunt did not. And I think eventually they have not taken the review because Nat Saver Brunt was not sure. Lizelle Lee was not sure. It was a length ball down the leg side, and Jemima missed a flick. I think she's missed. The bat has come down pretty late, and to the naked eye, it seems like the ball has clipped the trouser. And there you go. The captain has not said it, and no other player can signal for the review. And the umpire has rightly said, sorry, it's the captain who has to signal for the review, not Catherine Silverbrunt. And now, well, nothing on the ultra edge, and the ball has clipped the trousers. So if the review had been taken, it would have been a waste. So well done, Nat Silverbrunt, for not agreeing to your partner's call. And now, around middle and leg stump, it's worked away towards deep backward square leg for a single. Good start by the Trent Rockets. 10 balls bowled, 6 for no loss are the Northern Superchargers after electing to bat first. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will see. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे. जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे. Two sets are done rather, right? I'm just getting acquainted with the terms, and Rodriguez and Kelly are there fighting out for the runs. Now they have only got 6 runs in the first 11 balls that they've faced. Superchargers need to charge from here on because a matter of 100 balls, it can just get onto you if the first 20 balls do not yield you runs, and then if at all you don't get that start positive one. Now, it is just a flick towards the mid-wicket region. In the deep, there was a fielder, but it was a little square, and the shot was perfectly timed by Jemima, and beautifully done because the boundary has resulted in some positive intent cultivated on the ground here, as she knows how to take it from here on, and it can also be that thing where it is just going to be your day or not. The moment you try out things, the moment you start getting those boundaries below your belt and start getting those runs, it is always going to be a situation where you will get on the bowler and not allow the bowler to settle down with the line and length. 10 balls is what the bowler is allowed throughout the innings, and yes, if at all you happen to just unsettle in the first 3-4 deliveries, you'll get the output for your team with runs on the board. Absolutely. And so far we're just waiting for this that it's because at the end of the day it's teamwork. If one misses, the other has to be responsible. This has no reference to whatever is going on the ground. I'll be very true enough. I messed up with some settings. No. That was so nice of you, Karthik. Thank you. Well, it's teamwork. At the end of the day, it's teamwork. It's never a fault of one individual. It's always. But coming on a bit serious note, it can't be that every run has to be scored by Jemima Rodriguez. Kelly has to shed some jelly and then get some runs on the board, because otherwise this scorecard is going to move nowhere. That's better. Backing away across the leg stump and then driving it through the covers. I think Jemima Rodriguez must have had a quiet word with Kelly. She must have said, I don't mind working for 16 hours, but it would be better if both of us work for 8 hours. I think the output would be better and equally shade off. Left arm over the wicket from Stonehouse. It's Alexa Stonehouse. And
Well, it was driven beautifully through the covers, and Nat Silverbrand has actually got 3 fielders in front of the wicket on the offside for Kelly, but she has pierced the gap to perfection. 15 runs, 15 balls, no wicket loss so far are the Northern Superchargers. Who will bowl the next set? I don't think Stonehouse will bowl the next set. We might see someone else coming on to bowl. Yes, it is Kirsty Gordon, left arm spinner. Okay, so this is what I was confused between Stonehouse and Gordon. I knew Gordon was a left armer. What I didn't know was Gordon was a left arm spinner and Stonehouse is a left arm seamer. Left arm round the wicket is Kirsty Gordon. Down the track, it's a leading edge and it's taken! Goes wicket number 1. Wicket first ball for Kirsty Gordon. Beautifully flighted outside the off stump. And well, Mary Kelly came down the track and looked to slog across the line, but the ball pitched, spun away, took the leading edge, and a very, very good catch by the fielder at backward point, almost at short third, and she dived in front, and she's actually at short third, not backward point, and it's very, very wonderfully taken as we all await. It's Wilson. It's Fran Wilson, is it? Yes, Fran Wilson who has taken that catch, and well, Mary Kelly, unable to pick the scoring, departs for 5 from 5. 16 balls, 15 for 1 are the Northern Superchargers, and once again they are struggling to get that early start or a good start. And once again, Phoebe Litchfield is in early. She was in early in the first match that I covered. She was in early in the second match that I covered, and she's in early in the third match that I am covering as well. Very technically, very, very correct batter, known as one of the future prodigies for Australia in women's cricket. But she didn't have that kind of ashes which every Aussie fan expected her to have, and she was tested by some really good English bowling. But after that tour, when Australia went to Ireland, that's when she quite kind of came to her own and started playing some really crisp looking shots. Left-hander, so left arm over the wicket is Gordon. Goes back, that's Litchfield, first ball, and works it towards mid-wicket for a single. 17 balls done, 16 for 1 are the Northern Superchargers. Yes, and Rodrigues will have to, just build up on whatever she's done till now. And her partners need to just be in the process of support and or take on the charge from her. As she's got to the 10 run mark in 11 deliveries that she's faced, okay, all right for a start, but not that great, because 17 balls, 16 runs is considered as a slow start in a T20 or 100 or the shorter format of the game. But nevertheless, they need to also keep an eye on the wickets that they have in the kit, because if you tend to lose too many wickets in the course of getting runs, it's not going to help you set the momentum towards the end of the game. Always plan your innings in such a way that towards the end of the game, when you are left with say 20-25 deliveries to finish, you should be in a state where you can get those odd boundaries, a flurry of boundaries to settle your scores to a big level. And here these two are quite mature enough, are quite sensible enough to know what a situation demands and how to shape or to take the innings forward. As she goes down the pitch and connects the ball well over the deep extra cover for a boundary, that is a good looking shot. Again, she wanted to go to the pitch of the ball, but then the ball was a little quick than the earlier one, and it was played towards on the onside for a single. So 20 balls done, 22 on the board for the Northern Superchargers without losing a wicket, of course. Ads कितने annoying होते हैं ना, but do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will see. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे. जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी. और
Well, a change of ends for no, it's not actually change of ends. It's from the same end because over balls number 1 to 10 will be bowled from one end and balls number 11 to 20 will be bowled from the other end. So Catherine Brunt bowled all the 10 balls from 1 to 10 from end number 1 and she's back again to bowl her third set. And straight away Phoebe Litchfield comes down the track and looks to play inside out. One thing we have seen in these afternoon matches, these women's matches have mostly been in the afternoon because it's 4 p.m. IST, but it's 11:30 a.m. in England. So there's a little bit of nibble, there's a little bit of movement. And the other day we saw some really good swing bowling for we saw something for Kate Cross as well. And it is good to see that swing bowlers generate so much amount of swing. So it's not easy to play off these bowlers, and probably that's what Litchfield is trying. She's trying to use some kind of feet movement so that Catherine Silver-Brunt's length gets changed. And seeing that, Catherine has called up Lizzle Lee up to the stumps. It's almost after an age that I'm seeing Lizzle Lee play here because she's a former South African captain, did not play the 2023 World Cup because she was about to become a mother and then she retired from all forms for South Africa, and now I am seeing her play in this 100. And the throw, did that hit Litchfield on the bat or on the knee? I'm not sure. There are smiles all around, but a quick single taken on the leg side. 23 balls, 23 runs and 1 wicket taken. And Nat Silver-Brunt is let's have a look at it again. It was thrown and the ball, yes, it hit. It was a throw from Nat Silver-Brunt and it hit Litchfield on the left pad rather, not knee. And she stumbled a bit, but she recovered well in the end. Apologies from Nat Silver-Brunt, but she doesn't need to. She was just throwing at the stump. She did not intentionally hit the batter. Jemima on strike now to Brunt. Length ball outside the off stump, coming back in, pushed away towards mid-on. Just seems like there is too much sheen coming from that pitch over there. We aren't even able to see where the ball is pitching exactly. It is that shiny, that surface. And since it's a day game, it might just last for all the 2.5 hours that this match is scheduled to be. Catherine Silver-Brunt no longer plays for England. She's either on commentary or she plays these lower format games in domestic cricket. Around the off stump, pushed away by Jemima towards wide off to the left of mid off, and it's Harmanpreet Kaur only at that position. Well, 25 balls have been bowled. Brunt finishes a third set, 15 balls, 8 runs, no wickets. 25 balls have been bowled. Northern Superchargers once again have started from the south. They are yet to go towards north. 24 for the loss of a wicket, and now it's time for spin as the power play is done and Alana King is straight away on to bowl a leg spin. So these are some interesting matchups. Alana King is an Australian. Phoebe Litchfield is an Australian. Phoebe Litchfield would have played Alana King a lot of times in the nets, and she can pose. It'd be interesting to see Aussie versus Aussie. How does, and I think Nat Silver-Brunt has got her on probably for that reason only. She was not. I mean, Phoebe Litchfield was not at her best in the women's Ashes when playing against spin. And Alana King, as in fact, looking at her bowling average in the 100, 17.6 is magnificent, and economy is 5.8. In fact, she came into the Australian national side because of the 100. You don't normally see this. You see teams representing a country because of their domestic structure, but this lady has come into the international structure because of their arch rivals' domestic structure. And Alana King now to start off with right arm over the wicket to the left-handed Phoebe Litchfield. 24 for 1. Yes, and it will be interesting to see what the battle goes on. When you know somebody in and out, you try to do something different, and it might work or it might not work for you because you have to get something else. And in the process of getting something else, you might end up fumbling, or you might end up getting very disturbed or very, very expensive with the runs against you. Alana King would have bowled to Phoebe Litchfield, but everyone has that trump card that they tend to use it on special occasions, and this one can be the trump card that she will be using. But on the leg side, it should be a wide given, and it is rightly done, and the ball reaches a boundary in no time. It was a speedy delivery by Alana King. So here, sometimes even when see, this is what happens now, trying to do something different.
trying to bring that ball into the left-hander, but the line was way outside the leg stump at first, and when it pitched, it went further away, and Lee was not in a good position because half of the time the keeper sometimes are blinded, and because of the batter, and the ball reaches the boundary in no time. Now, a sweep being induced here, we get runs for Phoebe Litchfield, getting Rodriguez on strike. Again, talking about Alana King, yes, rightly said, you get to come to your country, your nation's team through your own domestic leagues. But here, when you're playing for England, you've done well in their, not even the county. It's just a game, it's just a series or a format, which is because some innovations were done in cricket, and this brought the birth of 100. And when you do well in other countries' league, and your country notices it, so there is also a plus point that the league shall carry some quality in order for you to be noticed by other countries. So that's a biggest positive that the 100 could get of selecting a person in their nation's side because of your weightage or your quality effort, what you have done in the process. Now a squared cover drive by Rodriguez to just enhance the scoring efforts. 28 deliveries have been done, 34 runs on the board. Again, she goes on the offside, but it's packed. It's seriously packed, but the earlier one was timed pretty well. Alana King getting back into the groove of that disciplined bowling, but that 5 wides will hurt her very, very badly because 4 deliveries and 10 balls against the name. You just spoke about her strike rate, and that was very phenomenal. And she completes a set of 5 balls with 11 runs that she conceded. It is 35 on the board after 30 balls being bowled. A wicket lost by the Northern Superchargers. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आप तो 30 गेंदों के बाद यहाँ पर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर नाओमी दत्तानी ने जेमाइमा रॉड्रिग्स का विकेट यहाँ पर निकाल लिया था. एक लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंद डाली थी, फुल टॉस डाली थी और यहाँ पर कैच. क्या आप कैच बोलेंगे? बिकॉज और यहाँ पर लिजर ली ने पैड्स क्यों नहीं पहने और गेंद जो है उनके घुटने में जाके लगी है. अब आप प्रोटेक्शन नहीं पहनेंगे और फिर आपको चोट लगेगी, फिर तो हम क्या ही कहे. जेमाइमा ने बैक अवे किया और फिर वहां पर पंच करने का प्रयास किया कवर्स के थ्रू. गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा लिजली के घुटने पे जाके लगी और गेंद वहां पे नीचे गिर गई. कैच तो छूटा वो अलग बात है, लेकिन उनको चोट भी आई है लिजल ली को. 32 गेंदों के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद छोटी गेंद, ये शायद एक वाइड हो सकती है. जी हाँ, बिल्कुल अच्छी कीपिंग लिजल ली के द्वारा, क्योंकि एक सीमर को अप टू द स्टंप्स कीपिंग करना इतनी आसान बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने वो किया और डाउन द लेग साइड जाकर एक अच्छी कीपिंग का मुजाहरा वहां पर पेश किया. 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 32 गेंदों पर. नाओमी दत्तानी ये भी इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, मोर ऑफ इन इंडियन ओरिजिन लगती हैं उनके फेशियल लुक से, पर ऑफ कोर्स मैं कोई अजम्पशन नहीं कर रहा. और यहाँ पर अपना रनअप वहां पर खोते हुए नाओमी दत्तानी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है, कुछ 10-15 पेसेस होंगे उनके जो वो भाग रही हैं. और जी हाँ, मिडिल सेक्स की खिलाड़ी हैं वो. मिडिल सेक्स में तो पैदाइश इंग्लैंड की है शायद, मे बी रूट्स जो है. अब नाओमी दत्तानी यूजुअली भारत में होते हैं सरनेम्स, और जी हाँ, उनके फादर का नाम भी दिलीप है, तो इंडियन ओरिजिन की हो सकती है. इस बार डाउन द लेग साइड जेमाइमा ने अक्रॉस जाकर पैडल किया है उसे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन तब तक एक खिलाड़ी आ जाएंगी वहां पर
गेंद को रोकने के लिए फाइन लेग से, और 3 रन यहां पर लेते हुए फीबी लिचफील्ड और जेमाइमा रॉड्रिग्स। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 को 3 में परिवर्तित किया। वहां पर 2 ही रन थे, लेकिन जब वो फील्डर थोड़ी सी वहां पर स्लिप हुई फाइन लेग पर, तभी लिचफील्ड ने जेमाइमा को तीसरे रन के लिए बुलाया, क्योंकि 2 रन तो थे, 2 रन लिया। और यहाँ पर उन्होंने फील्ड बॉल को पकड़ा खिलाड़ी ने, और फिर थ्रो करने के टाइम पे जस्ट थोड़ी सी वहां पर स्लिप हुई, वहां पे शायद थोड़ा डैम्प है उस एरिया में, और तभी तुरंत लिचफील्ड ने कहा चलिए हम तीसरे रन के लिए जाते हैं। 39 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 33। और अब बाएं हाथ के दत्तानी गेंदबाजी करेंगी बाएं हाथ के फीबी लिचफील्ड को, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ही 3 गेंदों में अभी तक इन्होंने 4 रन दिए हैं, और दत्तानी इस टीम की 5वीं बॉलर हैं जो गेंदबाजी कर रही हैं ऑन अ लेंथ ऑफ द ऑफ स्टंप। और ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट लिचफील्ड द्वारा, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड के बीच में से बाइसेक्ट किया है, और एकदम एक सर्जन की तरह प्रिसीजन के साथ उन्होंने ये गैप ढूंढ निकाला है। तो चौथी गेंद पर 8वीं रन आती हुई इस सेट की, 34 गेंदों में 43 1 विकेट के नुकसान पर। और अब ये साझेदारी की वजह से ऐसा लग रहा है कि रन रेट में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये साझेदारी अब हो चुकी है 28 सिर्फ 18 गेंदों में, और उन 28 में से 16 रन जो है जेमाइमा ने स्कोर किए हैं। तो उन्होंने इस पार्टनरशिप का आगाज किया है। और अब स्लोअर गेंद, फीबी लिचफील्ड काफी जल्दी अक्रॉस चली गई, क्योंकि फाइन लेग है ही नहीं वहां पर, और वो देखकर दत्तानी ने एक स्लोअर बॉल डाली थी लेग स्टंप पर। फीबी लिचफील्ड रुकी और फिर उसे पैडल किया लॉन्ग लेग की तरफ, 2 रन, फाइन लेग की तरफ माफ कीजिएगा, 2 रन। तो इसी के साथ ये सेट भी समाप्त 35 गेंदों के बाद 45 1 विकेट के नुकसान पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में, और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा। ये एक अच्छी साझेदारी, जैसे आपने कहा पहले तो आपको ना ये सोच बनानी होगी कि मुझे कैसे रन्स बनाने हैं, फिर आपको उस एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हुए आपके पार्टनर के साथ ना एक बहुत अच्छी साझेदारी वहां पर बिल्ड करनी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा कठिन होगा समझने को, लेकिन अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो ये जानते हैं कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपको एक रन कंप्लीट करने के लिए दोनों भागने पड़ते हैं। और इसीलिए वो जो 3 रन उन्होंने लिए ना, वो इतने अच्छे थे, एक रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए इतने अच्छी उदाहरण थी वो, कि जब तक जेमिमा रॉड्रिगेज दूसरे रन कंप्लीट करके पीछे देखती, तब तक उन्होंने फीबी लिचफील्ड को आधे पिच तक पाया था। तो इसलिए वो तीसरा रन तो उन्होंने दिल में ठान ली थी, दिमाग में सोच लिया था कि कैसे मुझे कैलकुलेट करके वो तीसरा रन भी लेना है। और इसी के साथ एक कैच ड्रॉप हुआ है कवर्स में, बिल्कुल सीधे हाथ में थी वो गेंद, और यहां पर गलती हो गई है जेमिमा रॉड्रिगेज। आप पेविलियन लौट सकती थी, लेकिन गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई। और अगर ये सीटी बच गई रॉड्रिगेज के लिए तो काफी मुश्किलात हो सकती है रॉकेट्स के लिए, क्योंकि ये रॉकेट कभी कभी जेमिमा रॉड्रिगेज ये दिखा रही है कि दमखम तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्राप्त किया है। और आज तो वो सोच के आई हैं कि स्वप्निल जाधव को वो एक आखिरी जो गलती हुई थी बांग्लादेश टूर में, उस बारे में तो मैं बिल्कुल अच्छा खासा करारा जवाब देने वाली हूं। और यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी लय में दिख रही है, क्योंकि 22 गेंदों पर 24, ऐसा मत देखिए। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, ये संयम ही शुरुआत करते हैं और बाद में वो इतना इनकैश करते हैं, उनकी जो हौसला होता है, जो कॉन्फिडेंस भर जाता है पहले 20 गेंदों के बाद, तो वो आपको दिन में तारे दिखाने की काबिलियत रखते हैं। 40 गेंदें हो चुकी है, 53 रन, रॉड्रिगेज 25 रन पर, लिचफील्ड 17 रन पर। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में, और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर,
जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है और एक्चुअली हमारे जो भारतीय श्रोताएं हैं उन्हें ये कहने का मौका मिले, देखने का मौका मिलेगा और कहने का भी मौका मिलेगा कि क्या आज आप जेमाइमा रॉड्रिग्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हरमनप्रीत कौर को, किसको आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज आप अपना जो पैशन है, अपना जो ओपिनियन है, प्लीज हमारे ऐप में जरूर डालिएगा और प्लीज ये जरूर बताइएगा कि कम से कम इस मैच से आप एक भारतीय दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं। क्योंकि भले ही यहाँ पर 100 में ज्यादा करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट्स में भाग लेने से भारतीय खिलाड़ियों को काफी मदद मिल सकती है। जैसे कि जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसके जस्ट पहले ऋचा घोष को WBBL में खेलने का मौका मिला, विमेंस बिग बैश लीग, और उसकी वजह से उनके फॉर्म में एक काफी एक चढ़ाव आ गया था। हरमनप्रीत कौर को भी खेलने का मौका मिला, स्मृति मंदना को भी खेलने का मौका मिला और जेमाइमा रॉड्रिग्स तो 100 के फॉर्म से ही भारतीय नेशनल टीम में कमबैक कर रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो होता है कि आप ये भारतीय क्रिकेट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जब भी आप भारतीय क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर आपके पास वो स्टैंडर्ड लोग ही होते हैं, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदना, अभी तो झूलन गोस्वामी नहीं है, पहले मिताली राज और अभी जेमाइमा रॉड्रिग्स। और इसी के साथ इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, पर बस अभी एक टाइम आउट की देरी है। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माई शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11।
क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिककॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिककॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है यश पाठक। क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है 11th, na? Yes, and Rodriguez and Litchfield have given stability rather than anything else because 51 balls, 68 runs, still on a lower side for this first innings. But nevertheless, you have just made a point, Mr. Karthik, that these two have to carry on this momentum in order for the new batter to come and get settled, rather allow him to get settled in the dugout itself and just follow what they have done. Absolutely, and 68 for 1 hour 52, and on that note, we would like to welcome Imad Ali on our YouTube channel. Well, the welcome can wait. But Jemima Rodriguez has been bowled by Stonehouse. The welcome has been stoned, or the effort to welcome Imad Ali has been stoned. We'll let you know who is Imad Ali, but welcome Imad Ali and thank you very, very much. And it was an arm ball from, actually it's not an arm ball, it's the left arm medium pacer Stonehouse. She just rolled the fingers over the ball around middle and leg stump. Jemima got across and tried to paddle it, but missed. The ball hit her pads and it hit the stumps. So Stonehouse breaks the partnership and it seems like Swapnil jinxed the pair of I was about to say that. Rodriguez and Litchfield. And even before I could give my opinion on what Swapnil said, the stumps were a mess. So,
Is this Georgia Wareham? Is this Georgia Wareham? Out. I think this is Georgia Wareham who has come in at number 4. Is this Georgia Wareham? Somebody pinch me. I think this is Georgia Wareham. She is. My word. Well, this is the promotion given by Holy Armitage because she was in superb form in the ODIs between Australia and England, and she was in good form in the T20Is as well. And well, now Georgia Wareham is actually doesn't have a great strike rate in her 100, but today she has got an opportunity. Stonehouse, left arm over the wicket to Georgia Wareham, driven straight back down, misfield from the bowler, no chance of a run. And how crucial was that wicket? That partnership was just taking its toll on the Trent Rockets, just going skyward. But then Jemima Rodrigues, she played a couple of shots like that, paddling it through fine leg, but eventually her luck ran out and she played a good innings. But again, I feel she has wasted her start. 33 from 32, and that's where she should have actually kicked on. Meanwhile, another set comes to a close as 55 balls have been bowled, 69 for 2 as Georgia Wareham, stunningly surprising Georgia Wareham, who bats at number 8 for Australia in international cricket, who bats at number 7 and number 6 for a domestic side in Australia, has been promoted to number 4. Could this just be that opportunity which Wareham needed? And now, because there is a slight break, we would want to just thank Imad Ali. Thank you very, very much, Magic Talk, Imad Ali, for and we take that we take your feedback on the behalf of Crick Kong, and we would definitely try and just make sure that your time spent on this app is justified. Thank you very, very, very much, and especially thank you for tuning in to our YouTube channel as well, and hopefully, well, we could do justice to our job. Meanwhile, now it's Wareham now ready to face Kirsty Gordon. Left arm orthodox player is Kirsty Gordon, a bowler, and now it's around the middle stump, and it's just worked away towards short mid wicket, no chance of a run. And the reason why Georgia Wareham has been promoted is that they might just be looking at pulling the run rate up now. They were just got a little bit. There she goes, tossed up around the middle stump. Georgia Wareham comes down the track and lofts it as clean as a whistle, straight back over the bowler. And by the time Harmanpreet Kaur can get across from long on, a couple of runs were taken. So Imad is saying that he actually works for Crick Kong, and he is a commentator in Crick Kong as well. And also, as he said, aapki commentary kamal ki hai. Thank you very, very much. And Crick Kong is the best for cricket fans. That also we definitely agree. And we urge all the fans out there that if possible, you can always tune in to our Crick Kong app, and please give feedback, and not necessarily positive feedback. If there is any constructive criticism, please put it across as to how can we better ourselves and try and entertain you on the app or even on YouTube. We are planning to go live on YouTube pretty much soon. This is just a trial phase, wherein as of now it's only for the internal guys, but very soon we shall go live as well, and you can also hear us on YouTube. Meanwhile, back to the match. Then final delivery of Christy Gordon of her third set, short delivery, and it's pulled away by Phoebe Litchfield through mid-wicket for a boundary. 60 balls gone, 77 for 2 are Northern Superchargers. How much can they add in the last 40 balls? Ads kitne annoying hote hai na? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिक कॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे. जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी.
और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और 63 गेंदें हो चुकी हैं, 79 रन बन चुके हैं। ये 64वीं गेंद थी, 80 रन यहाँ पर फील्डर ने बहुत अच्छा किया। अलाना किंग यहाँ पर 8 गेंदों में उन्होंने 13 रन खर्च कर दिए हैं। और ये मतलब एक अच्छी बात यहाँ पर हो गई है जब कार्तिक ने जैसे ही जॉर्जिया वैरम को देखा और जो मतलब वो याद आ गया, वो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो अच्छी पारियां खेली थी और अच्छी लय में है तो प्रमोशन तो बनता था। और मैं वो कह रहा था ना कि एक अच्छी स्थिति में जब एक नया बल्लेबाज आता है, एक नया बैटर आता है तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने के लिए। 65 गेंदें हो चुकी हैं, मतलब 13 सेट्स खत्म हो चुके हैं यहाँ पर और 83 रन है। थोड़े से कम लग रहे हैं लेकिन यहां से वो चाहेंगे कि बची हुए 35 गेंदों में एक अच्छा तकरीबन 70 या 75 रन या 80 रन तक बने। 70 रन 35 गेंदों में तो बन सकते हैं, 2 रन तो आप गिनते ही हैं हमेशा। तो ये एक बात होती है ना कि जब आप अच्छा करते हो। बहरहाल आपने ये भी सही कहा कि थोड़ी सी धीमी पारी थी जेमिमा रॉड्रिग्स की, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं, एक रन बॉल खेल रहे थे यहाँ पर। और थोड़े से वो कहते ना, कभी कभी अच्छी गेंदें नहीं होने के बावजूद कभी आप अपने ही प्रेशर में होते हो कि आपको रन नहीं आ रहे तो आप सिर्फ ढकेलना चाहते हो बॉल और भागना चाहते हो, बड़े बड़े शॉट्स के बारे में नहीं सोचते। तो वो भी एक गलत अंदाज हो जाता है जब आप T20 या 100 खेल रहे हो, उसमें आपको एक अलग अंदाज में बैटिंग करनी होती है। तो वो एक चेंज ऑफ योर जोन्स होता है ना कि आप एक वनडे खेल के आए हो, दूसरे दिन आपको T20 खेलनी है तो आपको ना वो मनोस्थिति होती है ना, एक स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, उसको बदलना होता है। क्योंकि आपको यहाँ पे 50 ओवर नहीं मिलने वाले, 20 ही ओवर मिलने वाले। जब आप 100 खेलते हो तो 20 गेंदें कम होती हैं और 20 गेंदों में तो पूरी कायनात बदल सकती है। यहाँ तो 67 गेंदें हो चुकी हैं, 84 रन हैं। लिचफील्ड ये बन गई राइट हैंड बल्लेबाज और खेल दिया है कहां पर, उनके लॉन्ग ऑफ पर, जहां पर हरमनप्रीत कौर है। और हरमनप्रीत कौर को अगर आपने शायद आप संदीप जी से वार्तालाप में व्यस्त थे तो जब भी उन्होंने फील्डिंग की थी, आप शायद कवर ही कर रहे थे, तो वो जब भी उन्होंने फील्डिंग की थी हरमनप्रीत ने और फेंका बॉल, तभी ना वो काफी खुश थी कि कुछ नया है, मैंने नए कपड़े, मतलब एक नया कलर पहना है बदन के ऊपर। और ये जो आपको आत्मविश्वास देता है ना कि क्रिकेट तो खेलनी है आपको, एट द एंड ऑफ द डे आप क्रिकेट ही खेल रहे हो, लेकिन जो आपके एक समय पे प्रतिस्पर्धी होते हैं उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे लोगों के साथ, जहां पर आपके एक टीम की बैटर आपने आउट की है और उसकी खुशी आप यहाँ पर मना रहे हो, तो ये मजा है क्रिकेट का आज की तारीख में। इसीलिए हम शायद देखते ना कि स्लेजिंग या एक कभी होती भी है तो वो एक अच्छे दर्जे की होती है, क्वालिटेटिव होती है, ना कि ऐसे कुछ भी आपने बोल दिया कह दिया। तो ये जो सीरीज होती है ना, ये 100 रहे या फिर जो नेशनल टीम्स के विद इन द कंट्री चलने वाले अलग अलग लीग्स होते हैं, T20s या वनडेज, उसमें आपके जो दोस्ती होती है उससे काफी हद तक आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। और आप जब एक दूसरे को फील्ड पर रिस्पेक्ट करते हैं, इवेंचुअली क्रिकेट गेट्स रिस्पेक्टेड। और यही तो कहना है ना कि सभी इंडिविजुअल्स से क्रिकेट बहुत ऊंचा है, उसका स्तर बहुत ऊंचा है, उसका स्तर आपको बनाए रखना है। आपकी जो गतिविधियां होती हैं ग्राउंड पर, वो क्रिकेट का स्तर डिसाइड करती है और ये यहाँ पर बखूबी दिखता हुआ। Absolutely, and also there could be one more reason. Depends on the person's ego as well. You're so used to being captain everywhere, so there is immense responsibility on you, and then there comes a series where you're not the captain.
so you don't have to think anything, but you have to think only about your skill. So Harmanpreet Kaur's skills in this case is batting purely and fielding. So she doesn't have to think, okay, next over who should be bowling. Next, she can go and help. Of course, she can go and help Nat Sivabrant. She played with her in Mumbai. And yes, Swapnil. And she did it. Yes. She did it. When she was bowling, she continued with the second set. Yes. Straight up friendly. She helped her set of field. Yeah. And she brought the third man inside. And then she pushed the fine leg behind. And then something or the other she did. Yeah. Because, see, you cannot keep the skill away from you. You are a captain always. You know, once a captain, always a captain. You might shred up the blazer. We see that with Steven Smith and Pat Cummins in the... We always saw it with Saurav Ganguly also. He was never in a mood to listen to anybody post his retirement also now. In the commentary box also, when he speaks, you have to ask, Dada, shall I? So that is where, you know, once a captain, always a captain. And now, I think she might not end up calling Zamima Rodriguez on the mistakes that she did. Because she's playing for another... altogether. Yes, but nevertheless, it's good to see all the cricketers coming together and gelling up throughout the year, and then you get healthy competitions. Because as we were talking about Alana King knowing Phoebe Litchfield, वो अक्सर ये होता है ना कि कार्तिक आप जानते हो आप क्या कर सकते हो. मैं एंटिसिपेट करूंगा कि आप एक ऑफ ब्रेक डालोगे. मैंने शॉट भी डिसाइड कर लिया है क्योंकि मैंने आपको आपके ऑफ ब्रेक्स नेट में 100 बार खेले हैं और आपने आकर एक गूगली डाल दी, समझो एक अलग सी गेंद कर दी, और अगर वो करते हैं तो मेरा एंटिसिपेशन जो लेवल है वो 0 हो जाता है और मुझे कुछ अच्छी तकनीक से आपको फिर खेलना पड़ता है. तो वो जब आप नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप्स या बड़े बड़े सीरीज में मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे क्या कर दिया है देखो, ये तो मतलब आप बैल मुझे मार, ये अगर सीधी ली के हाथ में जाती तो मतलब कुछ नुकसान होता नहीं होता. ये मारने की कोशिश ऊपर से, और आपकी फेवरेट प्लेयर जो जिसे फेवरेट नहीं मतलब आप जिसे देखकर खुश हो गए क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते कभी कभी आप प्लेयर्स को. The reason why I get shocked was it's almost as Shardul Thakur coming to bat at number 4. So that's why I was stunned. But well, it's a good take from Lizzie Lee, a bouncer from Naomi Dattani, and Georgia Wareham went for the pull, and she was in no control of that pull at all, and got a thin outside edge to Lizzie Lee, who was taking a good catch standing after the stumps. So Wareham comes and Wareham goes. Caught by Lee, bowled Dattani 13 from 15, and Northern Supercharge as well. Swapnil was mentioning 2 runs per ball can take them close to 140, 150. That would be a good score. Anywhere in the range of 140 to 150 can be a good score. But the question is, can they get to that score? Because 27 balls are remaining. And it's not easy either to go at 2 runs per ball. So now 2 batters have got set. That is Jemima Rodrigues, who got out after getting set. And now Phoebe Litchfield has got set as well. 31 from 22. Naomi Dattani trying to foil the plans of the Northern Superchargers. They don't have a deep batting lineup because there is only Alice Davidson Richards to come after this. Holly Armitage is the new batter around the off stump on a length, played towards short third. No chance of a run on that occasion. Armitage, she can use the long handle as well. She just needs to be a little bit more proactive at times. Sometimes she can just get stuck in a rut, but otherwise she is a decent batter. Normally she bats at number 3, but today she has given promotion to other batters. Sorry, at number 4, but she's given promotion to Georgia Wareham. Full outside the off stump, just clears mid-off. In fact, she's cleared mid-off by quite a distance, and she has found the boundary. 2 bounces in the ropes, 75 balls gone, 95 for 3 are the Northern Superchargers after electing to bat first. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे
आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट आपका। और यहाँ पर माफ कीजिएगा स्वप्निल, पर बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर कर्स्टी गॉर्डन की, बाएं हाथ की गेंदबाज है वो, बाएं हाथ की स्पिनर है। और यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स पिछले 2 मैचेस के मुकाबले तो आज अच्छी बैटिंग कर रही हैं, पर फिर भी अगर वो 130 तक नहीं पहुंचे तो एक अंडर पार स्कोर ही माना जाएगा, क्योंकि पिच काफी अच्छी लग रही है। लेग स्टंप काफी बार से स्वीप कर दिया आमिताज ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ। 1 ही रन मिलना चाहिए वहां पर और 1 ही रन मिलेगा भी। 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर 79 गेंदों में। और आखिरी गेंद इस सेट की और फीबी रिचफील्ड की अगर हम वैगनवीर की बात करें तो बिहाइंड द विकेट उन्होंने 71% रन स्कोर किए हैं, जो एक्चुअली क्वाइट इंट्रीगिंग है, यानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली वो विकेट के आगे खेलती है, बट यहाँ पर तो उन्होंने विकेट के पीछे खेला है। चलिए, जिधर से आपको रन्स मिले। और यहाँ पर एक बार फिर से विकेट के आगे इस बार स्लॉक कर दिया उसे डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन मिलना चाहिए वहां पर और 1 ही मिलेगा। 80 गेंदों के बाद नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स 97, 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ क्रिस्टी गॉर्डन का स्पेल समाप्त। 20 गेंदे 25 रन और 1 विकेट। शानदार शानदार यहाँ पर क्रिस्टी गॉर्डन का ये बॉलिंग स्पेल। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माई शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल 81 गेंदें हो चुकी हैं, 97 रन है स्कोर पर और ये बना दीजिए 103। बिल्कुल फीबी लिचफील्ड ने ये छक्का जड़ दिया है डीप मिड विकेट रीजन के ऊपर से और कोई चांस ही नहीं था, चांसलेस उन्होंने खेला। ओ ये 6 था। ये 32 से पहुंच गई हैं 38 रनों पर 25 गेंदों में। और ये काफी अच्छी शुरुआत इन आखिरी जो 20 गेंदों का खेल बचा था उनमें ये 19वीं गेंद थी जो उन्होंने लगा दी छक्के के लिए। यहाँ पर स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ फाइन लेग जो अंदर है 30 गज दायरे के। 83 गेंदों पर 103 का ये ठीक ठाक स्कोर है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए। बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते, हालांकि जो लाइनअप आप देखते हैं उसमें आप अपेक्षा करते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कोर बन जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर चौथे विकेट का पतन होता हुआ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए अलाना किंग, जो बहुत अच्छी तरह से जानती है लिचफील्ड को, उन्होंने लपका दिया है। लिचफील्ड 38 रन बनाकर आउट 26 गेंदों में। अलाना किंग हैज द लास्ट लाफ। राउंड 1 गया लिचफील्ड को, राउंड 2 गया अलाना किंग को, क्योंकि सिमिलर गेंद थी। पहली गेंद पर, यानी जो पहली बार खेला था तब डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 मारा था और अब जो है स्क्वायर लेग की तरफ गई गेंद, थोड़ी सी वहां पर लेंथ को पीछे खींच लिया वहां पर अलाना किंग ने। और यही होता है ना कि आप मुझे 4 छक्के मारिए, लेकिन अगर 5वें गेंद पर मैं आपको आउट कर दूं तो इवेंचुअली फाइनल लाफ मेरा ही होता है। एक और खिलाड़ी जो सेट होकर वापस पेविलियन लौट रही है, पर इस स्टेज पर आप किसी भी खिलाड़ी को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट स्थगित हो चुका है वहां पर। 103 4 विकेट के नुकसान पर और सिर्फ 16 गेंदें शेष है। अगर आप 2 रन प्रति बॉल भी यहां से लेते हैं तो भी आपका मैक्स टू मैक्स 135 ही आता है। तो यहाँ पर अब क्योंकि 2 नए खिलाड़ी हैं क्रीज पर, एक हॉली आमिताज है और एक बेस हीथ है, तो यहाँ पर मुश्किलें तो होंगी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए। अलाना किंग, उनके और 6 गेंदे बाकी और यहाँ पर गुगली, उसे थोड़े हवे में खेला पॉइंट की तरफ, रन लेने का कोई भी मौका नहीं।
85 गेंदों के बाद नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 103 4 विकेट के नुकसान पर। क्या अलाना किंग कंटिन्यू कर रही है? जी बिल्कुल जी कंटिन्यू कर रही है। क्यों नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जैसे आज बहुत ही अच्छी तरीके से मिश्रण किया है। और ये मतलब ना आपने मुझे 100 मारा लेकिन मैं तुम्हें 1 मारा, सॉलिड मारा। तो इस प्रकार का जवाब उन्होंने दे दिया छक्के के बाद ना, खुद को एक ऐसे जोन में डाल देते हैं ना आप कि क्या मैंने इतनी खराब गेंद डाली थी कि मेरे खिलाफ 6 रन बन गए। तो उसके बाद अगर आप वापसी करते हो ना तो वो बिल्कुल आपका दिन बन जाता है। तो ये मैं तो यहाँ भी अभी सोच रहा हूँ कि उन्होंने खुद से बोला होगा कप्तान को कि नहीं, मुझे डालने हैं ये बचे हुए 5 गेंद भी, और इस सेट और एक मैं कंप्लीट करके जाऊंगी। उसके बाद में आपको नहीं बोलूंगी कि मुझे और एक सेट दो, नहीं मिलने वाला इसके वही बोल रहा तो वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक बेहतरीन होते हैं ना खिलाड़ी, जो यहाँ पे देखिए हो सकती थी एक कैच, हो सकती थी एक बहुत ही बढ़िया कैच, उम्दी कैच हो सकती थी यहाँ पर। वाह वाह वाह, दत्तानी जो खड़ी हैं, ये क्या पोजीशन है उनकी? ये बिल्कुल स्क्वायर लेग की तरफ। नहीं स्क्वायर लेग नहीं, पॉइंट है ये उनका पॉइंट है। और बहुत ही बढ़िया, कैसे पॉइंट हो गया उनका? क्योंकि रिवर्स मारा था। ओके, उन्होंने रिवर्स मारा था। यस पॉइंट पे खड़ी थी और ये बहुत ही बढ़िया। मैं ना कभी कभी आप एफर्ट्स को भूल जाते हो। देखिए अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है ना तो ये अक्सर ये मतलब, मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ना एक भारतीय टच हमारे थिंकिंग को लग गया है कि अगर आपने कुछ पाया नहीं है ना तो मैंने जो भी मेहनत की है उसको मैं नजरअंदाज करता हूँ। ऐसे नहीं होता। इसलिए मुझे गणित बहुत अच्छा लगता है। आपका उत्तर भले ही गलत हो लेकिन आपने जो किया है प्रयास, उसके लिए यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। इट काउंट्स वेयर यू पुट इन द एफर्ट्स। It's okay, the result cannot be as desired by you always, but sometimes you should never neglect the process or the efforts that one has given. She has done all the things right, just did not hold on to it. That's okay. Otherwise, now see this ball which was hit in front of the wicket. The half of the crowd would say she should have ran fast and taken a catch. Every ball needs to be caught. No, it's not that way. Now to finish the set of Alana King, it's a boundary, so 20 balls, 1 wicket and 35 runs that she's given out. Amitaj is just batting on 8 and Bess Heath on 9, and 90 balls are done. It is 115 for 4. Ads कितने annoying होते हैं ना, but do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी 91 गेंदें हो गई हैं, 116 पर पहुंच गई हैं उत्तरी सुपर चार्जर्स, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स। और अब दत्तानी आ गई है ओवर द विकेट, यहाँ पर ड्राइव कर दिया सीधा नेट सेवर ब्रंट की तरफ एक्स्ट्रा कवर पर, जिन्होंने मिसफील्ड की और 1 रन वहां पर दे दिया बेस हीथ को। वो डॉट बॉल होना चाहिए था पर सीधा उन्होंने नेट सेवर ब्रंट की तरफ खेला और नेट सेवर ब्रंट अपने आप से खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने सीधा उनकी तरफ ये शॉट मारा और एक मिसफील्ड की और यहाँ पर 1 रन उन्होंने आसानी से दे दिया बेस हीथ को। 92 गेंदों में 117, 4 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदें शेष है। 8 गेंदों में कितना रन स्कोर कर सकती है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स? छोटी गेंद पुल कर दी उसे और दत्तानी ने कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो अपने राइट की तरफ जा रही थी, लेफ्ट की तरफ जा रही थी और गेंद उनके राइट की तरफ आई, फिसल गई वो रोकते रोकते और गेंद जो है इस बार कैथरीन सिवर ब्रंट की तरफ चली गई लॉन्ग ऑफ पर और वहां पर सिर्फ 1 ही रन लेने मिला आमिताज को। दोनों ही खिलाड़ी अब 10 के न्यूनतम स्कोर पर, व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गई हैं और यहाँ पर ट्रेंट रॉकेट्स यही सोचेंगे कि अगले 7 गेंदों में अगर आपने इन्हें 130, 135 तक रोक दिया
तो फिर आपकी तरफ से एक अच्छी एफर्ट मानी जाएगी। लेकिन ये एफर्ट्स ना यहाँ पर और बेहतर हो सकती हैं। एक और मिसफील्ड, शॉर्ट गेंद थी, उसे पंच किया सीधा पॉइंट की तरफ और वहां पर एक डॉट बॉल होना चाहिए था। डॉट बॉल का उधर 2 रन कर दिया उसे और एग्जैक्टली लिजर ली भी उस खिलाड़ी को वही कहती हुई कि कम ऑन, आप एक बेसिक फील्डिंग एरर नहीं कर सकते। आपने डाइव लगाई और आपने कोशिश की तो और ये दत्तानी की बॉलिंग की भी देखनी पड़ेगी कि वो लेग कटर कैसे डाल रही है, बैक ऑफ द हैंड से डाल रही है, तो उसे पढ़ पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर एक एलबीडब्ल्यू अपील, लेकिन तीनों स्टंप्स दिख रहे थे वहां पर और रन आउट हो सकती थी बेस्ट हीट। उन्होंने एक रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था और फिर उन्हें आमिताज ने एक सिंगल के लिए बुलाया और फील्डर आ गई थी स्क्वायर लेग से और उन्होंने एक थ्रो फेंकी स्क्वायर लेग से और तीनों स्टंप जो है वहां पर दिख रहे थे और शायद दत्तानी स्टंप्स पर आ सकती थी, आने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपील में ज्यादा व्यस्त थी और उनको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि वो वैसे ही थी। और इसी के साथ 95 बॉल्स हो गई हैं, 5 गेंदें शेष और दत्तानी भी कंटिन्यू कर रही है, एक साथ 10 गेंदें डाल रही है। सुपर बॉलिंग है उनकी भी, 15 गेंदों में 22 रन और 1 विकेट, 121 पर है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का। और यहाँ से मैं सोचता हूँ, मतलब मैं अपेक्षा तो करता हूँ या कोई भी अपेक्षा कर सकता है 5 गेंदों में कम से कम 15 या 20 रन उछाल के मार दें। और ये पहला ऊपरी सिरा लगा है बल्ले का, 2 फील्डर्स के बीच में ये गेंद गिरेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि आप सोचते हो कि 122 ठीक ठाक ही है क्योंकि आप नहीं जानते किस मंसूबे के साथ दूसरी टीम आएगी और वो रन करेगी। देखिए बहुत ही अच्छी कटर्स डाल रही हैं और वो खासी नाराज इसलिए थी क्योंकि इतना अच्छा करने के बाद अगर आप रन नहीं रोक रहे हो तो खासे नाराज हो सकते हैं गेंदबाज। और बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छी पुल शॉट वहां पर लगाई है और 1 रन का इजाफा, तो नहीं बड़े स्कोर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मेरी तरफ से आपके लिए ग्रिडल है। आपने कहा कि अनलेस ये उछाल कर मारे तो इनका स्कोर बढ़ेगा नहीं, और मैं ये कहता हूँ इनको उछाल कर मारने में तकलीफ हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि उछाल कर कौन मारता है? कैंगरू, और कैंगरू यानी ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, तो आप अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। नहीं, दिस इज द रीजन व्हाई द ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फॉर 150 इयर्स। नहीं, बिल्कुल ये अच्छा हंसी मजाक करना चाहिए क्योंकि आप तो जानते हैं मेरी सेहत 9 के बाद मेरा साथ नहीं देती। मेरी आंखें और मेरी जुबान ये यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल हो जाती है, तो उसके पहले जितना आप मुझसे मतलब बकवा सके बकवा लो उसके बाद तो हमसे ना हो पाई। पर लेकिन 2 गेंदें शेष है कार्तिक। हम सोच रहे थे इस गेम के बारे में, इस गेम के बारे में रादर। मेरा तो पहला गेम है, आज कवर कर रहा हूं मैं 100 का। काफी हद तक क्विक है, 100 गेंदे देखिए बिल्कुल पंक्चुअल है। 1 घंटा 10 मिनट तकरीबन। 4 बजे शुरुआत हुई थी, डॉट 4 बजे पहली गेंद, और मैं चाहता हूं यहां पर 6 रन 130 हो चुके हैं 99 गेंदों पर। ये जरूरत थी इस 6 की, क्योंकि ये आप लेके जाएंगे डगआउट में और डिस्कस करेंगे कि यहां से आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत ही अच्छा है ये खत्म करने का जो सिलसिला मैं कह रहा था ना कि 25 गेंदों में अच्छे रन अगर आप बना लेते हो आखिरी 25 में, तो एक अच्छा एक मोटिवेशन लेके जाते हो आप बॉलर्स के लिए आपके, कि देखिए भैया हमने इतना बना लिया है। बहुत ही बढ़िया यहां पर नजारा देखने मिल रहा है। फिर एक बार पोजीशन में आ गई थी, फिर एक बार पुल कर दिया है फ्रंट ऑफ स्क्वायर। वहां पर फील्डर है, मिस फील्ड हो गई है और एक चौका। 100 गेंदें पूरी हो चुकी हैं और रन हो चुके हैं 134। 4 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने का फैसला किया था नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने, और काफी अच्छी शुरुआत हुई थी, अच्छी थोड़ी सी धीमी, लेकिन एक ही विकेट गंवाया था जब मेरी कैली आउट हुई थी 15 रन के स्कोर पर। 5 रन उन्होंने बनाए। फिर बाद में जो एक साझेदारी बनी 53 रन की, जमीमा रॉड्रिग्स और फीबी लिचफील्ड अच्छी पारियां खेली। 33 रन बनाए रॉड्रिग्स ने और 38 रन बनाए फीबी लिचफील्ड ने। वहां पर बाद में जो हुआ, जॉर्जिया वैरम आई
और ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, 13 रन ही बना सकी। लेकिन बहरहाल 2 फील्डर्स ऐसे रहे जो प्लेयर्स, दो बैटर्स ऐसे रहे जो सेट होकर आउट हो गए, तो एक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए इसलिए। और हॉली आमिताज जो कैप्टन है 12 रन पर नाबाद रही, और बेस हिट 23 रन बनाकर नाबाद रही। कुल मिलाकर यहाँ पर एक्स्ट्रास कितने थे? 10। तो ये 10 एक्स्ट्रास पकड़ के बाकी सब मिला के 100 गेंदों में 134, 4 विकेट के नुकसान पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स। जी, अगर आखिरी की 2 गेंद निकाले जहां पर 10 रन आए थे, एक अच्छी बॉलिंग, एक डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस। और पहला ही नाम अगर मैं लूं, एक डाउट है कि नैटली सिवरब्रंट ने अपनी पार्टनर को 20 गेंदों का स्पेल क्यों नहीं दिया, वो मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा, क्योंकि 15 गेंदों में सिर्फ 8 रन दिए थे उन्होंने, नॉट डॉट बॉल। एलेक्सा स्टोनहाउस नॉट बैड, 10 गेंदों में 10 रन 1 विकेट। कर्स्टी गॉर्डन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, उन्होंने 20 गेंदें डाली, 25 रन दिए, 1 विकेट दिया। अलाना किंग एक और स्पिनर, 20 गेंदों में 35 रन 1 विकेट। आज उनका दिन नहीं था। नवमी दत्तानी 20 ओवर 35 रन। एक्चुअली उन्हें लास्ट के ओवर में थोड़ी मार खानी पड़ी, अन्यथा उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। और ब्रायन स्मिथ लेग ब्रेक बॉलर, 15 गेंदों में उन्होंने 20 रन दिए। तो बॉलिंग ठीक ठाक रही है, लेकिन पिच काफी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अगर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो उन्हें ये 134 डिफेंड करने में दिक्कत हो सकती है। तो हम फिलहाल चाह रहे हैं एक ब्रेक पे, हम वापस लौटेंगे जब ही ये रन चेस शुरू होती है तब। You are listening to Flash News, brought to you by Crickon. Welcome to another exciting episode of Flash News, your ultimate source for the latest updates and insights in the world of cricket. I'm your host Isha, and today, we have got a lineup of intriguing stories that will keep you glued to your seats. Kicking off today's headlines, we delve into the recent controversy surrounding Rahul Dravid's coaching role in the Indian cricket team. Former India fast bowler Dodda Ganesh has stepped up in defense of Dravid, stating that the criticism he's been facing is unwarranted. Ganesh emphasized that Dravid shouldn't be held accountable for the team's shortcomings, especially in the T20I series against West Indies. On the flip side, former Pakistan spinner Danish Kaneria wasn't shy in expressing his criticism of Dravid's coaching style. Kaneria suggested that Dravid lacks the assertiveness required for T20 cricket coaching. It's an ongoing debate that raises questions about the dynamics of coaching and its impact on team performance. Shifting gears, let's talk about the roller coaster ride of Sanju Samson's form in the Indian team. Former supporter turned critic, Danish Kaneria, didn't hold back in questioning Samson's consistency. With Samson struggling to convert opportunities into runs, Kaneria raised the point, when will he step up and deliver for the team? This scrutiny comes at a crucial juncture for Samson, with competition heating up from emerging talents like Yashasvi Jaiswal. The clock is ticking, and Samson's quest to solidify his spot intensifies. In a surprising turn of events, Manoj Tiwari, the Bengal cricket star, has reversed his retirement decision and is set to make a comeback. Last week, Tiwari had announced his retirement from all forms of cricket, but on Tuesday, he revealed his change of heart. The Bengal captain expressed his desire to give it one more try and chase the elusive Ranji Trophy title. Despite leading Bengal to the Ranji final twice in the last 3 seasons, Tiwari's team has fallen short of claiming the championship. Tiwari, who is just 92 runs away from the 10,000 run milestone in first-class cricket, holds a remarkable record with an average of 48.56 and 29 centuries over his 19-year career. His decision to return was influenced by his dedication to Bengal cricket and the encouragement from others, including Cricket Association of Bengal President Snehasish Ganguly. Our next story takes us into the realm of Surya Kumar Yadav, a shining star in T20 cricket but a bit dimmer in the world of ODIs. Yadav openly acknowledged his struggle to adapt his aggressive T20 approach to the 50-over format. He candidly discussed the mental adjustments required and his determination to contribute to the team's ODI success.
As he works on finding his rhythm, Yadav's journey sheds light on the challenges faced by modern cricketers navigating different formats. Down under, Australia A is gearing up for a showdown against New Zealand A, with Marnus Labuschagne leading the one-day charge. Labuschagne aims to bounce back after missing out on the ODI World Cup squad. Meanwhile, the search for David Warner's successor in the Australian Test side continues, with Cameron Bancroft, Matt Renshaw, and Marcus Harris vying for the coveted spot. It's a test of talent and potential as Australia showcases a blend of experience and emerging talent on the cricketing stage. Switching gears, let's talk numbers and finances. The Board of Control for Cricket in India remains the heavyweight champion, not just on the field, but in the financial arena as well. With staggering revenue from ICC events and the cash-rich Indian Premier League, the BCCI shelled out a whopping 1,159 crore rupees in income tax during the 2021 to 2022 fiscal year. This financial muscle cements BCCI's position as the richest cricket board globally, showcasing the monumental impact of cricket's popularity. Wrapping up with a twist, former cricketer Akash Chopra raises eyebrows with his take on Hardik Pandya's recent innings. Chopra suggests Pandya should have taken a step back and allowed young gun Tilak Verma to complete his half-century in the third T20I against West Indies. A decision that's ignited debates and discussions across cricket circles. Verma's resilient unbeaten 49 and Suryakumar Yadav's explosive performance steered India to victory, leaving us wondering about the fine line between individual milestones and team objectives. Before we wrap up, fantasy team enthusiasts can now revolutionize their gaming experience with our Crickong app. Prepare to unlock the full potential of your team selection as our app provides a wide array of interactive features and expert predictions. Our esteemed analysts offer valuable insights and game-changing analysis, giving you a strategic advantage in the highly anticipated live matches. We emphasize the significance of considering multiple factors and making informed decisions to optimize your team's performance. Immerse yourself in the thrill of the game with our engaging live commentary and captivating podcast. We highly value your input and encourage you to share your feedback through our interactive chat option. It's time to take your fantasy team selection to new heights and dominate the competition like never before. And that's a wrap on this edition of Flash News. What a ride it's been, diving into the dynamic world of cricket news and updates. Remember, folks, stay connected by tuning into the Crickong app for all your cricketing needs. Don't forget to follow us on social media to catch every twist and turn in the cricketing universe. Until next time, I urging you to keep those cricket conversations alive. This is Isha signing off. This is Flash News, brought to you by Crickong.
the chase begins, and 99 balls are left, and 135 is the target that has been set. The first ball straight away coming into the batter, and the second ball is swept well by the batter Lee, and Lizelle is not going to spare time looking at the deliveries because she has a great idea of what the pitch is like, because she was 100 balls keeping for her team, and here she goes bang on the second ball bowled by Lindsay Smith. She's coming over the wicket to Lizelle Lee, and yes, it is a good game to witness, because good batting efforts by the players of the Northern Superchargers, and now the bowlers will be expected to defend the score of 135, which is a target in front of the Rockets, Trent Rockets. They've started well with a dot ball, then a boundary, and then a single. First 4 balls giving them 5 runs, and that is a positive start. Now the intent is good. They have got that required boundary in the first set of 5 balls, and 4 balls actually now have been bowled here, and Bryony Smith will be facing the first ball from Lindsay Smith. She has put it across the covers for the first boundary to her name. First set of 5 balls is done. It is 9 runs on the board without any wicket down for the Trent Rockets. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू. Second set is here been started. There's a slip been kept for Cross, Kate Cross, the bowler, and it will be Bryony Smith who keeps the strike, because they change strikes after the 10 balls per end, and that is the reason she keeps the strike even after the end of the first set, right? And here we are seeing Kate Cross bowling the second set. Here she comes driven towards the cover, straight into the hands of extra cover, to the cover fielder, and it is a good looking start. You cannot say that's a slow or a quick start, but yes, Kate Cross, who has been part of the England national side, and with her bowling performance, what we can expect is in T20, as she has got 11 wickets in one day, she's got 78 wickets. And now there's a misfield at the backward square leg region, and yes, should have been a single, but nevertheless, Wareham, she slipped, and due to the slip, they were allowed to take an extra run as well. So a couple of runs added to a total. Lizelle Lee and Bryony Smith have given them a good positive looking start. Not a very flourishes start that we can expect, but nevertheless they are into a great groove. And when you have 11 runs on the board with the first set, giving you 9 runs, then there's a couple towards the backward square leg region, and when we have that, and in the first innings we saw that she was not wearing the keeping pads, and she got hurt when she was fielding. So that is the reason why she was into pain. But the first 10 balls have been done. 90 remain, 124 to get. After the end of second set, it is 11 for no loss. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट
से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और 2 sets done, 11 on the board, 124 to get in 90 deliveries. And here comes the new bowler. And what can we expect from Grace Bollinger? She's bowling from the pavilion end. Is some wickets here? And when she starts bowling on the leg stump line, you cannot expect that to happen. Left arm over the wicket to Lizelle Lee. And she gets a single of the first ball of the third set, taking the score to 12. And 123 required in 89 deliveries. So that is a good difference that can put a pressure. But you know, if you get those runs up frontly or continuously, you will never be bothered about what is left and what are to get. Of course, you will have to stay in touch of the requirement. But if you are getting those brisk boundaries, if you are getting those change of sides, and you're all set to run those couples, and where possible, even the third run can be possible, as we saw a couple of threes in the first innings, and that shows how anticipated they are in getting those runs of every delivery, because a shorter format, 100 deliveries only, to prove your worth as a batter or as a bowler. You get 20 deliveries, that is 4 sets that you can bowl. Here, if you get to bowl a dot ball, it will be very interesting, because 3 balls she's bowled, Grace Bollinger, and she's only given 2 runs in the first 2, only a single rather, that was taken by Lee, and from there on, it's just a good over that we can expect her to finish off with. This is now played towards the covers. Is it running towards the boundary? Yes, it has. So Bryony Smith crushed through the covers, because that ball was asking to be hit away from the right-hander, and she clubbed onto it, and straight away a boundary that will do her a world of good with the confidence, because that is what is required. Now she goes on to 10 runs in 9 deliveries that she's faced. And with a couple of boundaries, she's into the groove of taking the chances to reach to 135 that are required in those 100 deliveries. Now towards the onside, there is protection at the cow corner, and only a single that can be taken, getting Lizelle Lee on strike. This is some brilliant batting by Bryony Smith, and she's facing Grace with Grace in her batting. And with that pun, I welcome Karthik to do some fun in the combox. Yes, Karthik, they have got to a good start rather. 17 runs in the first 15 deliveries, and Cross is bowling the fourth set rather, and it is good to just have a partner like you to cover this chase, where 135, which is not that too for a score, but sensibility is what is required in the first few deliveries to set the tone for the chase. How ironic it is that you talk about sensibility to a person sitting right in front of you, side right next to you. But jokes apart there, I think Swapnil knows me better than that. Here, it's so difficult to read this score. If anyone is watching this stream, it's so difficult to read a score in a run chase of 100, because the team score is never put. It's very rarely put, and then that it gets toggled with a target. But the score as of now is 18 for no loss, and it's Bryony Smith and Lizelle Lee. And I just want to check their batting options. Why was Bryony Smith sent out to open? I thought it might be someone between Natsiva Brunt or even Harmanpreet Kaur to open the batting for the Trent Rockets, but then better not the short ball, and it is pulled away towards deep back of square leg. She finds a gap and she finds a fence. Boundary for Bryony Smith. It was a short ball around. There are 2 Smiths, you see. There is one Lindsay Smith also in the bowling team, and there is Bryony Smith. So I got confused which Smith was this or is this. And
Well, just to remind everyone, the target for the Trent Rockets is 135, and trust me, they've got a lot of ignition fuel in their tank to just fly sky high. It's Kate Cross. No, the ball is not swinging. The bat is swinging, and that's a good piece of fielding by the fielder. And it's how can we forget this particular face? Always a smiling face. Alice Davidson Richards, always smiling. She gets across from mid-off and stops the ball. And well, it is a dot ball now, and the score again, once again, confused, 22 for no loss, because I'm seeing 113 runs needed. And now suddenly the score pops up. 3 bowlers used so far: Lindsay Smith, Kate Cross, and Grace Bollinger. Kate Cross about to finish her second set of 10. It's a slower delivery again, hammered down through mid-on, who dives over the ball, and what should have been just a single now turns out to be a couple. It's Phoebe Lisfield who does that misfielding. We saw a few misfields in the first innings as well. She shakes her head, and well, the umpire signals that is the end of this set. 20 balls done, 24 no loss are the Trent Rockets. 111 more needed in the remaining 80. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे. जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें. Short ball, and it's another boundary. The name is Bollinger, but the result is a Battinger for Lizelle Lee. A short ball outside the off stump, and Lizelle Lee cuts it to the right of point and gets a boundary. And I don't know why Swapnil probably is in two minds. He actually processes what I say in his mind and plays KBC with that. Option A, I should smirk. Option B, I should get out of the room. Option C, I should go to hell. And option D, okay, I should take all of the above. Option D, I should take pity on this guy. Pity on this guy now, and start laughing. And eventually he does that option D. Dhanush missed it now. The bowler is the Bollinger, but Lizelle Lee is a Battinger. She's getting a boundary. Shouldn't we all exit from this earth on this joke of Karthik's? Okay, what okay? No, seeing I'm putting a pedestal on that. We know that Karthik has some really good collections of those. Yeah. Actually, he has a good collection. You try writing a book on PJ. You're saying pathetic jokes. I thought PJs usually meant practical jokes. Yeah, but it's not practical. What practical in this you find? This is killing grammar. But I was an English teacher. Oh, I gave you the title. You remember? I made you a scientist the other day. Yeah. Talking about a stratosphere. The ball went up, high and higher. And it just missed the stratosphere by an inch. Oh, she's put it down. Alice Davidson Richards. My word. That was a sitter. That was just a ball outside the off stump. And Smith. Well, Alice Davidson Richards, it just went in and pop. It just went out. And Alice Davidson Richards, for all the she sets in cricket, in women's cricket, she would be with herself. And well, what a let off for Smith. Short delivery, pulled away, this time towards mid-on, does not carry to Kate Cross. End of another set. 25 balls gone. Well, the Trent Rockets surviving a few now. 33 for no loss. 102 more needed from 75 balls. All those imagining what happened on that ball, it was a drop catch. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते
क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल सीरियसली यार, कोई बीमार पड़ गया तो ये कैसा सवाल हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अगर तंदुरुस्त होना है ना तो लिजर्ली की बैटिंग देख लीजिए। ये वो आपको इतनी प्रेरणा दे सकती है। इट्स नॉट अबाउट योर physique, it's all about your mentality, what you carry on the ground. And one of the stalwarts that she has been in cricket, a respected cricketer all around the globe, and she was just expected to play a little bit more for her country, but after she got the best blessing, being a mother, she just decided to put a exclamatory ending, not a full stop, and this is why she's continuing playing in these kind of leagues around the globe. And this is some good tough fight for the 97 runs that are required in 71 deliveries that are left. Brian Smith batting on 22 of 19 deliveries, Lisa Lee on 13 of 10, and Georgia Wareham, she's bowling pretty well, almost given a runner ball. Now 5 balls she's bowled and done with the set, 6 runs that she's given. 70 balls remain, 96 to get. The score is 39 without loss. Ads कितने annoying होते हैं ना, but do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत Lindsay Smith now comes across from left arm round the wicket to bowl her second set. First set had gone for 9 in 5 balls. Left arm round the wicket, and it was slogged by the other Smith, Brian Smith, towards long on for a single. 95 needed from 69 deliveries. Tossed up, and it's a wild swing from Lizelle Lee. The ball spins away, takes the outside edge, and goes towards short third. No slip in place. We remember that Jemima Rodrigues also got out in a similar fashion. The ball spun away, taking the leading edge and going towards short third, and this time though it took the outside edge of Lizelle Lee. Now Smith to Smith, full toss in the air, long on, long on, long on. Is she a spectator? She is a spectator as the ball clears the ropes comprehensively. It's a full toss outside the off stump, and Bryony Smith lofts this full toss over long on, and oh yeah, flashes on the giant screen as this one goes for a maximum 88 more needed now from 67 deliveries. 47 for no loss is the score, and also 47 is this partnership. The 6 went 71 meters far. She goes again. This is a straighter, and probably she will clear long on. No, she can't. Kate Cross gets across to her left from long on and keeps the bat. No, she's not Kate Cross. She is Kate Cross. Beg your pardon. And she keeps the batters to a single. So well, that's 1-1
6-1. So that's 9 runs in 4 deliveries of this set so far. And now a quick one, the arm ball outside the off stump. Lee goes to punch but gets a bottom edge towards short extra cover. So 35 balls have been bowled and the Rockets are 48 without any wicket. 87 more needed from the remaining 65. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर. एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. So in the remaining 64 deliveries now they are requiring 86, and it is the fielder who dropped the catch, and now she's come to bowl Alice Davidson Richards because and now she'll just be wanting to get a wicket for making up for the drop catch. Now bowling on the leg side won't give you any help from any fielder because you don't have any fielder that was placed behind the 30-yard circle in the final leg region. And a good start to this set. The second ball disappearing for a boundary and a very poorly bowled delivery. That was not expected, a slow ball, but it was just put to the final leg region. Actually, not the final leg region, but it was the backward square, and it was. I don't know what English to say. It was not blapped. It cannot be blapped. Blapped is not even a slang. And no worries, but 82 required in 63. They are getting well with this chase. Now through the covers for a single. And there's a protection in the deep to get only the batters to cross for a single. Liz Lee, the senior partner of this partnership, she has made a big statement by giving the strike more and more to Brian Smith that okay, if you are into that momentum of getting those runs for the team, so be it. It is a result that is going to count now towards the end, because from here on to get to 135, what is the target, they require a positive approach more than anything else, because if you entirely play the 61 deliveries that are left for the 18 runs to be gotten here, it will come if you bat the entire quota. That is a dead rock which will never change. And now she gets it towards the cow corner region. There is a fielder who gets into picture. A single to end the set. 60 balls remain, 79 to get here. And Alice Davidson Richards conceding 8 runs in the first set that she bowled. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड. क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे. जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी. Short ball. Could have been a long result, but just short, well short of the fence, of course. Georgia Wareham not been her day at all. First she was sent at number 4, could not do much with the bat, and now hasn't done well with the ball either. 6 balls, 10 runs. Now could this be a deep mid wicket? Can't get there. Short ball around the off stump. I think it kind of stuck onto the surface because it seemed like Lizel Lee played that. Brian Smith played that shot a bit too early and miscued it towards deep mid wicket, but the fielders could not get to the ball in time. In fact, the ball never reached them. 74 needed from 58 balls. This partnership
is just rubbing salts on the wounds. For after a long time today, Northern Superchargers batted really well today. I mean, not entirely, but compared to the previous two games. But as they say, it's not quite gone to plan for them with the ball. Now this has gone all the way. You need not even think of catching that. Oh, she's gone! My word, I have to take my words back. You have got a wicket of a not so good delivery, and trust me, I don't think she thought that this would be caught either, because this went bang. Rockets literally fueled that with as much as 100,000 K of ignition fuel, and Lizelle Lee got down and slog swept it. And I thought that's gone all the way, but nice catch by the fielder at deep mid wicket. She knew where the ropes were, and she was patrolling the ropes very, very nicely. And well, the first wicket falls down, and we are awaiting to see who the catcher is. And Lizelle Lee departs for 16 from 16, but the Trent Rockets are in a good position. 74 needed from 56, and it's Higam who has taken that catch. Lucy Higam, who was not required with the bat and who has not yet performed with the ball yet. She's an off-break bowler. We might see her in action. And now comes England's player of the year. That's Natalie Siver-Brunt. And she has been a standard for them in every format. Talk about Test, talk about One Day, talk about T20, and she's the one reason why the Ashes ended at 8-all. Otherwise, Australia would have clean swept all the three series. Now, short delivery from, and we have seen this so many times in the white ball format. Georgia Wareham bowling to Natalie Siver-Brunt. First delivery short and turning away. Natalie goes back and punches this down to long on for a single. Just trying to decode how did that get caught near the ropes. I think that particular area was maybe the longer part of the boundary. Otherwise, that was connected really, really well. End of a fantastic opening stand that was worth 61. 55 balls remain, 73 to get. If you happen to get overview of the stadium, of this ground, you'll find that the boundaries which are squarer are a little ovalish. So the what do you say, a geoid or an ovalish shape, like an egg. Oval shape, that's like an egg. So quite of that wider, say 5-7 yards can be, or maybe 3-4 yards. That caused that catch to go into the hands of the fielder. That is the reason why, be very sure about clearing the boundaries. As in this moment, Brian Smith is making no discrimination in any bowler. May it be Lucy Higam or may it be anyone. Just come, bowl to my strength, I'll take you to the cleaners. So, where you're requiring only 67 and 54 now with that 6, and that is a distance of 69 meters. He's got very well. See, on the other side, it is very small, and on one side it is like a geoid shape. So that is good. It is calculated by her, and she has put it across the ropes, taking a single, taking herself to 49 of 30. And 53 balls remain rather here, and it will be 66 runs that are left to get. Target is of 135. How do you see the score going to 69 for only 1 wickets lost? And this can be termed as a good chase being shaped. A chanceless innings by both the openers. The wickets were on the card somewhere down the line. When you're playing the shorter format, in order to get those quick runs, you might hold out, or you might miscue one, mistime one, miss a ball, get bowled, but wickets will fall. But if at all you make that extra effort of getting those plus runs or extra runs on the board in order to stay safe, will help you to not lose the momentum towards the end or towards the mid of that innings, almost towards the halfway mark. 51 balls remain, 65 runs to get, quite gettable. And 50 balls, yes. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं. सिर्फ एक ही डाउट था मेरे ख्याल से, स्मिथ का कैच छोड़ा था एलिस डेविडसन रिचर्डसन, बस वो एक चांस उन्होंने दिया था, अन्यथा यहाँ पर. और इसी के साथ यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए यहाँ पर ब्रायनी स्मिथ के लिए, क्योंकि उनका अर्धशतक पूरा हुआ है सिर्फ 32 गेंदों में. जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है. चेस तो एकदम परफेक्टली सेटअप हुआ है. आराम से ये जो ट्रेंट रॉकेट्स है वो इस रन चेस की तरफ बढ़ती जा रही हैं. और यहाँ पर
सिर्फ अगर वैसे तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मैच कोई भी मैच कभी खत्म नहीं हुआ, अगर वैसा बोलना हो तो ये जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा T20 आई था वो शायद एक बेस्ट एग्जांपल था, क्योंकि वेस्टइंडीज को 25 रन चाहिए थे कुछ 37 गेंदों में, और वहां से वेस्टइंडीज ने 2 ओवर में उन्होंने 4 विकेट खोए और भारत को ऑलमोस्ट जीत के कगार तक लाकर खड़ा कर दिया। तो हम बोल तो नहीं सकते कि ये मैच खत्म हो गया है, पर फिर भी यू नेवर नो कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को अगर 1-2 विकेट जल्दी मिल गए, खास करके नैटली सिल्वर ब्रंट का और ब्रायन स्मिथ का, यहाँ पर जो है मैच का रुख बदल सकता है। मुश्किल है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आगे आकर से प्रहार कर दिया है, क्या ये सीमा रेखा के पार गई है? जी हाँ, बिल्कुल गई है। ब्रायन स्मिथ ने लिंजी स्मिथ को बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया है। फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन छोटी थी लेंथ। आगे आए ब्रायन स्मिथ और उन्होंने पुल कर दिया उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 58 रनों की आवश्यकता 48 गेंदों में, और ये जो है यहाँ पर इस मैच का रुख, ब्रायन स्मिथ तो यही कह रही हैं कि हम तो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को इस गेम में वापस लाना ही नहीं चाहते, हम जीतना चाहते हैं और जल्दी जीतना चाहते हैं, ताकि आगे जाके अगर नेट रन रेट पर ये मैच या हमारी पोजीशन डिसाइड हुई तो फिर हम आगे रहे। क्योंकि काफी ज्यादा मैचेस जो है इस विमेंस, आपने स्वप्निल के मुंह से ही सुना था कि वो जो 2 मैचेस कर रहे थे दोनों अबैंडन हो गए थे, तो काफी ज्यादा मैचेस में बारिश की संभावना रही है। आज एक ऐसा मौसम है जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों, इसके बाद जो मेंस का मैच है सेम 2 टीम्स के बीच में, ट्रेंट रॉकेट्स और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, उसमें भी ऐसे ही धूप खिली रहे और बारिश ना आए। तो जहां पर आपको मौका मिले, इंग्लिश में कहावत है कि मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, तो आज धूप चिपकी हुई है तो खिली हुई है, तो आप जो है उसका पूरा लाभ उठाएं। उसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप अपना विकेट फेंक के जाएं, लेकिन 57 रन चाहिए 46 गेंदों में, ज्यादा यहाँ पर रिस्क की बात नहीं। आप 1 और रिस्क की शॉट एक ओवर में एक सेट में खेल ही सकती हैं, एंड इफ पॉसिबल आप जो है 18 या 19 सेट्स में ये रन चेज को आप ये अंजाम दे सकते हैं। 56 रन चाहिए 45 गेंदों में। नैटली सिल्वर ब्रंट आई है और उनका एक ही यहाँ पर एम है, सिर्फ सिंगल्स देना है, और यहाँ पर टाइम आउट का शायद एक इशारा हो सकता है कप्तान से, और अंपायर भी शायद थर्ड अंपायर से। जी हाँ, टाइम आउट का इशारा है यहाँ पर। 45 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता ट्रेंट रॉकेट्स। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू to enjoy what you will see. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11? बिल्कुल, इससे भला नहीं होगा अगर आप डॉट बॉल खेलेंगे।
लेकिन खासी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 45 गेंदों में आपको 56 चाहिए थे, अब 44 गेंदों में आपको 56 रनों की जरूरत है। यहां पर बन सकते हैं, ये हवा में मार दिया है, बिल्कुल ये खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, और पीछे लॉन्ग ऑफ तो होगा नहीं क्योंकि आपने मिड ऑफ रखा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत इस सेट की हो गई है। दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया है। ये क्या हो रहा है कि पहली गेंद बिल्कुल अच्छी थी और उसको जाने दिया पूरी शिद्दत के साथ कीपर के ग्लव्स में, और उसके बाद वो कहने लगी ओके इतना ही मैं कर सकती हूं, उसके बाद मुझे मारना ही होगा। तो उन्होंने एक चौका लगा दिया, और यहां पर केट क्रॉस थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्टिव लाइन और लेंथ कर रही हैं, जहां पे उनको पता चल रहा है कि कहां पर गेंद होने वाली है और मैं उसी प्रकार का शॉट लगाऊंगी। और नताली स्किबरब्रंट अब आ गई है बैटिंग स्ट्राइक पर, और देखते हैं कैसा होगा उनका रवैया, क्योंकि बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए, 51 रन चाहिए, और बहुत कम गेंदें नहीं है, 42 गेंदें हैं। तो कुल मिलाकर यहां वहां से आप देखें तो 51 से अगर आप 42 घटा दोगे तो 9 ही गेंदें आपके पास कम है। यहां पर कर दीजिए 10 गेंद कम है, अभी 41 गेंदें बची हैं और 51 रनों की जरूरत है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अगर आप सोचें कि आपको एक सेट में एक चौका अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आपको एक गेंद पर कहीं ना कहीं 1, 2 या फिर 3 रन भागने हैं। तो ये तो मुमकिन है, आप 5 गेंदों पर 5 रन बनाइए, वो तो बिल्कुल ही मुमकिन है। तो आप 18वें या 19वें अगर सेट तक लेके जाना चाहते हैं मैच, तो आपको आपकी विकेट बचानी होगी। यहाँ 40 गेंदें बची हैं, 51 रन चाहिए, 135 का टारगेट है, और रन यहां पर हो चुके हैं 84, 1 विकेट के नुकसान पर, और 60 गेंदें बिल्कुल खत्म हो गई है। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में, और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will see. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते बेहतरीन अद्वितीय बेहतरीन शॉट यहाँ पर ब्रायन स्मिथ द्वारा। आज दिन वेरहम का तो बिल्कुल नहीं है, और वेरहम को वेयर हाउस की जगह दिखा रही है यहाँ पर ब्रायन स्मिथ। कुछ भी डालिए, किधर भी डालिए, आज वो रन बनाने वाली है ऐसे लग रहा है। ये थी एक लेग स्पिनर ऑफ स्टंप के बाहर, और इनकी जो एक इंग्लिश में वर्ड है ऑडेसिटी, ये देखिए, इनकी हिम्मत देखिए कि तीनों स्टंप्स एक्सपोज करके ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खड़ी है। बॉलर को चैलेंज करिए, डालिए, मुझे बोल्ड करके दिखाइए, और बॉलर ने स्टंप्स पे डाली भी नहीं गेंद, बॉलर ने ऑफ स्टंप के बाहर ही डाली और उसे स्वीप कर दिया लेग स्टंप स्क्वायर लेग के पीछे 4 रनों के लिए। अगली गेंद यहाँ पर अंदरूनी किनारा ब्रायन स्मिथ का, छोटी गेंद थी और इसे पुल करने का प्रयास किया ब्रायन स्मिथ ने, जल्दी खेल गई और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, अपने पैड्स पे लगी, और फिर कीपर जो है आगे आई कैच करने के लिए, पर नहीं पहुंच पाया। और इस बीच बाउंड्री लाइन के जस्ट अंदर, खिलाड़ी के जस्ट दूर से, क्या वो जेमाइमा रॉड्रिग्स थी? ऐसे लगा जरूर, नहीं, जेमाइमा रॉड्रिग्स नहीं थी, एक फ्लाइटेड गेंद थी, आगे आकर उसे स्लॉग स्वीप कर दिया वहां पर ब्रायन स्मिथ ने। कनेक्शन इतना खास नहीं था, फील्डर आई थी डीप मिड विकेट से, अपने बाएं तरफ छलांग लगाई, गेंद तक पहुंच नहीं पाई, और वो कैच जो है लपक नहीं पाई, और वहां पर जो है गेंद उनके हाथ के पास नहीं पहुंच गई और सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। अब आगे आकर फुल टॉस ले लिया है, और ये शायद इनके इनिंग्स का अंत हो सकता है, बिल्कुल होगा। और ब्रायन स्मिथ ने जो कहते हैं ना इंग्लिश में, थ्रू कॉशन टू द विंड, बिल्कुल वैसे ही किया उन्होंने कहा छोड़िए, आज मेरा दिन है, आज मैं हर बॉल अब मारने का प्रयास करूंगी। लेकिन व्हाट अ नॉक। जॉर्जिया वेरिन को विकेट जरूर मिली है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जो दर्शक है वहां पर ग्राउंड पर, वो ब्रायन स्मिथ के लिए खड़े हो रहे हैं, स्टैंडिंग अप्लॉज दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पारी वहां पर उन्होंने खेली है।
70 रन बनाए हैं 44 गेंदों में, और वहां पर एक बार फिर से लूसी हिगम ने ही दूसरा कैच पकड़ा है, और जॉर्जिया वेरम को ये दूसरी विकेट, 15 गेंदों में 20 रन और दूसरी विकेट, लेकिन अपनी टीम को इस जीत के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 35 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। हरमनप्रीत कौर अब नए बल्लेबाज आए हैं, और अब ऐसे लग रहा है WPL की मुंबई की टीम ही आ गई है। नैटली सिवा ब्रंट और हरमनप्रीत कौर, कितने मैचेस हमने देखे थे WPL में, दोनों ही एक दूसरे के, वो दोनों ही खेल रही थी, और थोड़े मैचेस के लिए हेली मैथ्यूज खेल रही थी, नहीं तो उस मुंबई टीम में जो स्तंभ थी वो थी एक हरमनप्रीत कौर, फिर दूसरी नैटली सिवा ब्रंट, अमीलिया कर तीसरी, और चौथी हेली मैथ्यूज। एंड टुवर्ड्स द एंड इसी वोंग ने प्रदर्शन चालू किया था, बट हरमनप्रीत कौर आ गई हैं। 42 का एवरेज है 100 में एवरेज इतना फर्क नहीं गिरता जितना स्ट्राइक रेट गिरता है, पर वो एक ऐसे समय पर आई है जहां पर ऑलमोस्ट उनके टीम के इस चेहरे पर लिखा हुआ है कि आप जो है जीत चुकी है और जीत जाएंगे, और आ गई है अब बॉलिंजर गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट। और हरमनप्रीत कौर के पास एक मौका है सिर्फ थोड़े रन्स बनाने के लिए, अपने आप के लिए धीरे धीरे इस फॉर्म में, क्योंकि ये भले ही 100 के लिए वो खेल रही है, लेकिन उनका जो मेन एम है इसके बाद आने वाले एशियन गेम्स में होगा, जहां पर उनकी कोशिश रहेगी कि भारत के लिए एक मेडल जिता दिया जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स से काफी क्लोज आई थी वो, ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हराते रह गई और सिल्वर मेडल से उन्हें संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन इस बार एशियन गेम्स में भारत एक जो है एक फेवरेट टीम बनकर उतरेगी वहां पर, क्योंकि अगर आप महिलाओं की क्रिकेट देखते हैं, खास करके एशियाई क्रिकेट में, इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नाम आता है इंग्लैंड, तीसरा नाम आता है भारत का ही, और उसके बाद न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो उस हिसाब से उस टूर्नामेंट में जाते अरे हरमनप्रीत कौर कोशिश करेंगी कि फॉर्म में जाए, यहाँ पर फिसल सी गई, वहां पर फीबी लिचफील्ड आई, उन्होंने गेंद को रोकने के लिए आई डीप कवर से, गेंद के पास पहुंची भी, लेकिन गेंद के पास पहुंचते पहुंचते उनका बैलेंस जो है छूट गया और वो फिसल गई, और फिसलते फिसलते गड़बड़ हो गई और सीटी बच गई। गेंद जो है उनके पैर को लगकर, उनके घुटने को लगकर डिफ्लेक्ट हो गई, और उन्होंने जो है जो 1 रन होना चाहिए था वो 2 रन में तब्दील कर दिया, और हरमनप्रीत कौर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पहला रन भी स्कोर कर दिया, 2 रन 2 गेंदों में। अब जो है 94 है स्कोर, 41 गेंदों में चाहिए, माफ कीजिएगा 33 गेंदों में चाहिए 41 रन। बिल्कुल, अपने आप के लिए स्कोर करना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, और एक टीम के एफर्ट में भी जुड़ जाना एक अच्छी बात होगी, उनके लिए जहन में होगा कि आज कैप्टनशिप का कोई बोझ नहीं है सिर पर, कोई बल्लेबाजी करने में कोई हर्ज नहीं है यहाँ पर। हरमनप्रीत तो मतलब हरफन मौला खिलाड़ी है, ये कभी हालांकि प्रेशर में नहीं खेलती, कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो वो एक अच्छे अप्रोच के साथ जाती हैं, और अपने रन बनाने की गति जो है वो हमेशा नियंत्रित रखती हैं, और जिस समय जिस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए भली भांति जानती है करना। और यहाँ पर एक आध 2 गेंदे या फिर एक सेट ले सकती है खुद को ढालने के लिए, उस गतिविधियों का एक हिस्सा बनने के लिए। 31 गेंदे और 41 रनों की जरूरत है। यहाँ पर 94 हो चुका है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से 94 रनों में से 70 रन एक ही खिलाड़ी ने बनाए थे, ब्रायन स्मिथ, 44 गेंदों में। तो सोचिए कितना बड़ा योगदान एक बल्लेबाज का हो सकता है जब आप अच्छी तरह से चेस करते हो। यहाँ पर बैठ कर बिल्कुल एक पैर पर बैठ कर पुल लगाने की कोशिश फ्रंट ऑफ स्क्वायर में मार दिया है लेग साइड की दिशा में, और ये माफ कीजिए एक और एक सेट समाप्त हो गया। 30 गेंदे शेष हैं, 40 रनों की अब जरूरत है जीतने के लिए। देखते हैं कैसा आगे का हाल होगा। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से
चाहिए आप कहाँ आएंगे, ये ऐसे कुछ कह रहे होंगे एलिस डेविडसन रिचर्ड्स कि आप जाएंगे कहाँ, कि आप बच के कहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, दोनों की टीम में ज्यादा फर्क नहीं है इस स्टेज पर, कि अभी फिलहाल भले ही ट्रेंट रॉकेट्स की पोजीशन काफी अच्छी है, पर 5 रन का ही इजाफा है दोनों के बीच में। सुपर चार्जर्स इस स्टेज पर 90 थी, ट्रेंट रॉकेट्स इस स्टेज पर 95, अब 99 हो गई। लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसे सिर्फ दिशा दे दी एलिस डेविडसन रिचर्ड्स की, सिर्फ दिशा दे दी शॉट थर्ड के राइट साइड में, और गेंद जो है सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अब सिर्फ 36 रनों की जरूरत है 28 गेंदों में, और मेन चीज ये है कि सभी जो खिलाड़ी है अपने आप को वहां पर एंजॉय कर रही है। अभी एक देखने मिला हमें कि जैसी ब्रायन स्मिथ आउट होकर चली गई, उन्हीं के एक ऑपोजिशन टीम वाले, लेकिन उन्हीं के कंट्री के प्लेयर ने उनके साथ एक फिस्ट पंप किया, कहा कि बहुत बहुत अच्छा खेला आपने, और मतलब एज अ स्पोर्ट अच्छा लगा आपने जिस तरह की बैट, भले ही हम हार रहे हैं लेकिन आपने बैटिंग काफी उम्दा तरीके से की, ये सब देखने को अच्छा लगता है। और यहाँ पर जैसे कि स्वप्निल ने कुछ मिनट पहले कहा था कि ये जो स्लेजिंग, क्योंकि इतने सारे लीग्स हो गए हम, इनफैक्ट ये सेम चीज बेन स्टोक्स ने भी कहा था कि इतने सारे लीग्स में अब इतने सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वो एनिमोसिटी ही नहीं है। आप ऑलमोस्ट बेन स्टोक्स और डेविड वार्नर को हर लीग में पाएंगे, हर लीग में, चाहे वो बिग बैश में हो या इंडियन T20 लीग में हो या न्यूजीलैंड के कोई लीग में हो या फिर वो साउथ अफ्रीका के लीग में हो, आपको मिल ही जाएंगे इधर उधर। तो आप इतना गुस्सा लेके जाएंगे कहाँ? आप इवेंचुअली एक कैमराडरी बन जाती है। हाँ, वो एक क्षणिक गुस्सा होता है, कभी एक आध बार ऐसे हुआ, बट इवेंचुअली आप वो जैसे कि कहते हैं कि व्हाट हैपेंस ऑन द पार्क स्टेज ऑन द पार्क, उसे बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे बचपन में कहते थे, झगड़ा हुआ है तो वहीं पर सुलझाकर घर पे आना, घर पे झगड़ा मत लेके आना। 25 गेंदें शेष, 35 रनों की आवश्यकता। एड्स कितने अनोइंग होते हैं ना, बट डू यू नो व्हाट्स नॉट अनोइंग? माय शो कॉल्ड फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू टू एंजॉय व्हाट यू विल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। Beautifully struck towards the onside at the Kaukan region. There is a fielder, and Higham comes to the bowling arena where she's bowling to a set pair of Harmanpreet Kaur and Natali Skewer-Brunt. I'm using this word set pair because these are the kind of players you do not expect them to come and be in the shell, and then when they get a boundary or get a six, they come to the party. No, they start the party from ball number 1. They are confident enough. You know, sometimes people mix up what we say that they are not in a good touch if they don't get a boundary of the first ball. No, they are in a good touch because now that's got a jinx. I'll just bite my tongue here because I was praising the batting efforts these two have, and Higham strikes here. That's a wicket going down against a run of play. Actually against a run of play because it was not on the cards, and that spin on the ball, did that do too much, or did the flight effect the choice of shots? I don't think she was in a great position to stretch too wide away from the leg stump to play that shot over the mid-wicket region, and she missed it completely, and the bails were dislodged. So a wicket for Higham will always be remembered by her because 8 balls she had given 11 runs. She was wicketless until she got Natali, and a good breakthrough, Karthik. Absolutely, when you get Natalie Skewer-Brunt, it's all, any breakthrough is a good breakthrough. But I just saw the comparison between the two teams, and there isn't much difference between the two teams at this stage. So you have to keep on believing, and also losing this match or winning this match is not the end of the world. There is a tournament happening, and you have to keep on
learning from every match. So always a momentum from this match which can help you in the coming matches. And Northern Superchargers have not been on the winning spree. They have been struggling in this tournament. So any kind of positivity that they can clutch to, they should be doing it. Fran Wilson now comes out to bat at number 5. First delivery. Oh, LBW appeal, but I think it was sliding down the leg side. This is very good bowling from Lucy Higem. Already she has been a part of this. In fact, she has been part of all the 3 dismissals that have fallen. The first 2 she had taken catches, and the third one she got, albeit in a bit lucky way, because the ball pitched on off stump, spun in. Natalie Sivar was beat. Oh, she's bowled him! Bowled her rather, not bowled him. Lucy, where were you? This is an off spinner, pitched on the off stump and then spinning in, and well, Fran Wilson went back to cut it, but the ball stayed low, went beneath the bat, bang, crashed into the stumps. Are we on to something here? 80 balls done, 102 for 4 in the span of 5 balls. This match could possibly be turning, and what a set this has been from Lucy Higem. Well, first she got Natalie Sivar, and now she's got Fran Wilson. 1 wicket, 0 wicket. A wow spell. Will she continue? No, she's not continuing. She's been sent back to her fielding position at deep mid wicket. All of a sudden, boy oh boy, we might be in for something sensational here. 33 needed from 20. Harmanpreet Kaur is still out there in the middle. But don't forget, every batter who has not been set out there is as good only as her previous innings. 33 needed from 20, 102 for 4. The game is turning big time. The game is on right now because 20 balls remain, 33 to get. How many times do we repeat that sentence? Because now Trent Rockets will be expecting more out of Joanne Gardner. And one interesting thing that I was just watching this dugout when they were panning the camera towards the dugout of the Rockets. It was Naomi Dattani who was ready from the first ball with her pads on, helmet in her hand, and I expected her to be promoted, but in that process they've lost 4 wickets, but she's not out to bat. And I don't know why she's all padded up and ready to go out to score these runs. And if she was not going to come. And as it is wrongly mentioned here that Naomi Dattani is on the field. She's not. It is Joanne Gardner. And yes, on the leg stump again, swept towards the backward square leg region. Here it is a single-handed. Harmanpreet on the strike now. 19 balls remain, 31 to get. 31 रन बनाने के लिए अब क्या करना होगा कार्तिक? ये कि साझेदारी जो है ना यहाँ पर बनानी नहीं है, आपको अपना गेम खेलना है. ये 12 रन आप पहले कवर कर दो, एक आध 2 गेंदों में, 3 गेंदों में, 4 गेंदों में, और उसके बाद आप जो है ना ये दायरा जो है 31 रनों का पार कर सकते हैं. अगर आपने अब बॉलर्स को अच्छी तरीके से खेला तो ही आपके रन बनेंगे. अगर आपने ऐसे डॉट बॉल्स खेले तो वो जो अब फासला है ना 13 रनों का, 18 गेंदें बची हैं और 31 रनों की जरूरत है, तो लगभग एक चौका यहाँ पर इस सेट में होना चाहिए, एक छक्का. देखते हैं कौन लगाता है. जोएन गार्डनर ने तो एक रन यहाँ पर ले लिया, और हरमनप्रीत कौर जो 10 रनों पर खेल रही है, अभी खासा अंदाज उन्हें आया होगा कि क्या चल रहा है पिच पर. देखते हैं कितना बड़ा शॉट लगाती है, इस माहौल को किस हद तक हल्का कर सकती है. ये फ्लाइट डिलीवरी थी, शायद और ज्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करती तो कुछ और रन मिलते, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं 1 ही रन लिया है हरमनप्रीत कौर ने. मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में खेला गया शॉट था. वेरहम, उनको आप कह रहे थे उनका दिन नहीं है, लेकिन अभी 19 गेंदे कर चुके हैं, 24 रन देकर 2 विकेट उनके हाथ में है. एक पासे कैसे पलट जाते हैं, देखो बिल्कुल आप सोच रहे थे कि अच्छा खासा रन चेस होगा, लेकिन 15 गेंदे अब शेष. 29 रनों की जरूरत. देखते हैं कुछ जादू ही कर सकते हैं क्या इसके बाद गेंदबाज. Yes, and on this note, I would like to get in Sporter Andy into it. Sporter Andy, when we asked you whom do you support more, Jemima or Harman, you said Harman. And now we are asking you, can you predict her score today? And also I would like to ask you, do you think that Harman can take her team across the line? And I was wondering, why has Joanne Gardner
been sent across ahead of Naomi Dattani, Katsiva Brunt. And I get my answer. Joanne Gardner recently played in the Charlotte Edwards Cup. This was on 31st May 2023. And, but she's not going to make any contribution in this match. What Miss Gardner did in that match, because in this match she has not done much. What a delivery from Lindsay Smith. Spin is making heads turn here. Flighted delivery around the off stump. Joanne Gardner came down the track, looked to whip it to the onside. Big gap in bat and pad. The ball pitched, spun away, and then hit the top of off stump. Gardner came in, Gardner went out, and 5 wickets down now, half the side back in the hut, 29 still needed from 14 balls, and Lindsay Smith finishing off her spell now, 16 balls, 26 runs, 1 wicket. Ooh, are we seeing some nervous signs in that dugout? Because Catherine Brunt is looking nervous, Alana King is nervous, but tell you what, as long as Harmanpreet Kaur is out there in the middle, Trent Rockets would believe that she can win the game from any position. The ball is turning, but Harmanpreet Kaur is probably one of the best players of spin, if not the best player of spin in today's era. So she will be careful. She will know from where the ball is turning. The ball is turning for sure. And also another thing to note is how many spinners are remaining now. There is Lucy Higham, who is left out to bowl spin. But after that, Kate Cross is a seamer. Grace Bollinger is a seamer. And also, Alice Davidson-Richards is a seamer. Naomi Dattani comes out to the middle. 29 needed from 14 deliveries. 106 for the loss of 5 wickets. As at this point in time, Superchargers were 1 run ahead and a wicket ahead. A dot ball now. Short ball outside the off stump. The crowd getting into it. Getting involved into it as well. The crowd which is supporting the Superchargers, of course. Short delivery, and Dattani went back and punched it straight back to the bowler. 29 needed from 13. Short delivery again, spinning in, work towards deep in wicket, short hand with the soft hands. Will they come back for the second? Well, Dattani wanted. Harmanpreet was not even impressed because she just turned her back on Dattani as if to say, just like Suryakumar Yadav did in 2020 in that Mumbai dugout, stay calm, I am there. So that's what Harmanpreet Kaur seems to be indicating. Don't worry, you folks. As long as I am there, I will not allow this match to slip. Smith now to Harmanpreet Kaur. She's bowled. What a brilliant piece of bowling this has been from Lindsay Smith. क्या से क्या हो गया? बेवफा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन किस्मत बेवफा निकली है यहाँ ट्रेंट रॉकेट्स की. 92 for 1. We said the match is in their hands, and all of a sudden it's 107 for 6, and again we get that comparison of the West Indies India second T20I, where West Indies needed 26 from 37 balls and almost lost the match from there. Harmanpreet Kaur, flighted delivery around the off stump. She tried to work it across the line, and that's very risky on this type of a pitch where the ball is turning. Now there seems a big gap between bat and pad. The ball went through the gap and hit the top of off stump. 28 needed from 11. Alana King now walks out to bat. She can bat a bit, of course. She is no mug with the bat, and these two heroes have to pull out something. Last 10 balls, 3 wickets for the Superchargers. Final delivery of this set. Short delivery, pulled away, straight to short. Finding magnificent piece of bowling from Lindsay Smith. The previous set of 5 went for just 1, 2, 3. In fact, the last 3 sets, if I might add, 2, 3, 4, 5, 6, just 7 runs and 4 wickets in the last 15 balls. And now, it's a bit of a trouble in the last 10 balls remaining, and the Rockets need 28 in those last 10 balls. They need some high ignition fuel. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archives, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा. कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, scores and much more. Anyways, continue to enjoy what you will see.
हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकेट के इस बेहतरीन ऐप पे आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी में एक्टिव है तो वहाँ को भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे रास्ते। इस बात की जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक क्रिकॉन पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप में। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊटपटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। थैंक यू सो मच फॉर क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिकॉन ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माय शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलोली ऑन। हाय, मेरा नाम है नंदा। आप सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में। Having a look at all the numbers, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। 2 or 4 11112 ही मिल जाएंगे। 0111 जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन ऐप और सुनते रहिए। See, you can give the reason for the ball started spinning. Ads कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archive, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहां पर? ऑफ कोर्स क्रिकॉन ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स and much more. Anyways, continue to enjoy what you will. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड क्रिकॉन के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहाँ पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे रास्ते। तो देख किस बात की जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक क्रिकॉन पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊटपटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11।
क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। ही मिल जाएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। Over the Trent Rockets, it has been कितने a annoying होते हैं stunning ना? win. But do you know what's not annoying? My show called From the Archive, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहाँ पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू to enjoy what you will see. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, हम देते रहेंगे आपको ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी बातें बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगी, आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आप फैंटेसी लीग्स में एक्टिव है तो वहां पे भी जानने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे राज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकॉन्ग के ऐप पे और मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पे जिसका नाम है स्टैट्स अनप्लग्ड। दिस इज योर होस्ट, आपका दोस्त आयुष रूंगटा। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिककॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त। यहाँ लक और तुक्के के साथ साथ यू ऑल्सो नीड द बेस्ट प्लेइंग 11। क्या आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको बेस्ट फैंटेसी 11 मिल जाए और आपकी रिसर्च और स्टडी बहुत इजी हो जाए? वेल, आपको बता दूं कि क्रिककॉन्ग ऐप पर क्रिक फैंटेसी टॉक में बेस्ट पिक्स के साथ फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो देर किस बात की है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए ऑन माई शो नेम क्रिक फैंटेसी टॉक ऑन जस्ट एंड मियरली सोलली ऑन। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिककॉन्ग ऐप। क्रिककॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। ही मिल जाएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिककॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। कितने annoying होते हैं ना? But do you know what's not annoying? My show called From the Archive, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा एक टाइम मशीन में और हर हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड एक नई और अनोखी कहानी आप तक ले आऊंगा। कहाँ पर? ऑफ कोर्स क्रिककॉन्ग ऐप पर, जहां आपको मिलेगा क्रिकेट से रिलेटेड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, स्कोर्स एंड मच मोर। एनीवेज, कंटिन्यू to enjoy what you will see. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। Always go on with chasing here, and it's always backing your skills with confidence, and that is what they have just managed to do. 9 runs, a small margin, but nevertheless it was a good match to witness after being there for 200 balls. You keep your spirits high
at the end of the day you say that the game has emerged winner. Absolutely, and that is why, we say never give up, and whoever invented that saying, the game is not over till that fat lady has sung. The fat lady did not sing at all, at least not what the Northern Superchargers felt. So Jemima Rodriguez's team has beaten Harmanpreet Kaur's team, but one has to question that short selection of some of the batters of the Trent Rockets. We were talking me and Swapnil were talking on air, and we felt that there was a little bit of casualness in that batting, and that happens. We're not blaming anyone, as we also felt that the game was done and dusted. We did say that even when Bryony Smith got out, we said that she has got the team right onto the doorstep of victory, but the other batters just forgot to ring the doorbell, and hence the door did not open at all. And that usually comes not due to nervousness, but simply due to a little bit of casualness. For example, Natalie Siva-Brunt, she has been in superb form throughout the Ashes, and here she played, I won't say an irresponsible shot, but she played kind of a loose shot where she did not account for the turn of the ball. Harmanpreet Kaur also, she has got out playing that shot a lot many times in international cricket. Especially I've seen that getting out in that fashion to Ashley Gardner when India has played against Australia, and even against England she has got out to the spinners, especially Sophie Eccleston, because she gets the ball to spin away from her as well. So there was a little bit of casualness, and when you know that you are the best players of spin in this particular lineup, you could have maybe done a lot better. But that's why failures are important. Why are failures important? So that you learn from them, and it's good that these failures have come at this juncture of the tournament rather than the business end of the tournament. So a quick summary then. Trent Rockets managing 125 for 7, thanks largely to Bryony Smith, who scored 70, but batters either side of her could score only 51, and 4 went in extras. And the player of the match, of course, was Lucy Higham, 20 balls, 3 wickets, but that game turned when she took 3 wickets in the span of 2 balls. Georgia Wareham, 20 balls, 2 for 24. Lindsay Smith, 20 balls, 2 for 27, but we are still wondering how did this run chase just bottle up, because 92 for 1 and 43 needed from 36 balls, and they ended up falling short by 9 runs and losing 5 wickets, and all the 5 wickets after Bryony Smith's dismissal were bowled. And in the first innings, Northern Superchargers made 134 for 4, riding on starts from Jemima Rodriguez 33 and Phoebe Litchfield 38. Very rare do you see an Indian and Australian coming together and putting up a show. And Bess Heath towards the end, scoring 23 unbeaten from 10 balls. And Kirsty Gordon, Catherine Brunt, and these two bowled really well. And question has to be asked to Natalie Siva-Brunt, why didn't you allow your partner to bowl that remaining set of 5 balls? But it is as it is, as Northern Superchargers beat the Trent Rockets by 9 runs. Well, that's all from this particular podcast from the pair of Karthik and Swapnil. But we are not going anywhere. Our manager is not so kind enough to give us an early shift. So we are here. We are here for a lot longer. Right now, our colleagues Dhanush and Deepesh are covering the ECS game. You can definitely tune in there. But in an hour's time, roughly less than an hour's time, we'll be back with the same 2 teams, only with a different gender. It will be Trent Rockets versus Northern Superchargers, and those will be the men who would be playing that particular game. And it's going to be David Malan versus Harry Brook. Harry Brook, we all know who was exceptional in the Ashes. And David Malan, who was the number 1 T20 player for quite a long time. This will be a very, very interesting match, and it's going to be played on the same ground. There is no threat of rain, so no pain, and there is all to gain. So until for a few more minutes, this is Karthik and Swapnil signing off. Bye-bye. Hey, see you. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.